नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, a very warm welcome once again. थोड़ी देर पहले हमने एक महामृत्युंजय मंत्र का किया था and I did promise you that we will come live again and here we are. Yes, not the best of times again. We all know what has happened. Uh, but at the same time, I think we all have to be very practical. We have to look at things how they are shaping out at this point of time. अगले क्या steps होंगे, क्योंकि मैं उस session में था, मैंने बहुत कम चीजें अभी I could capture, but I would love all of you to please come and join and share your thoughts and share what has happened. I have heard this bill has been rejected again, and then there are other updates around Sushant's case, जहां पर अर्जुन रामपाल के केस के ऊपर भी उनके घर पे भी एनसीबी की रेड हुई है. I don't know if something has been found out, if something has been um, recovered from his home, but I would love to hear all of you. At this point of time, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ और मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूँ. Guys, I know this is not the best of times. I know this is not the best of results. हमने जो एक्सपेक्ट किया था, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉजिटिव रहना प्रैक्टिकली शायद इम्पॉसिबल है, बट आई थिंक दिस इज वेयर इट मैटर्स द मोस्ट. हमें ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें ही सबको अपने आसपास पॉजिटिव रखना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. आई विल टेल यू वन थिंग. जहां तक रही अर्नब की बात, Arnab Goswami is a very, very strong, very powerful man. Yes, he has been, बड़ा brutal हो रहा है उनके साथ, whatever the system is doing. But at the same time, I think from a legal perspective, he has the best team, he has the best resources available to him. And I am pretty sure he will come out confident and very, very, strong. बट एट द सेम टाइम इस टाइम पे जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, जिस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं उनके थ्रू, उनके लिए, आई थिंक दोज आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड. बट एट द सेम टाइम जहाँ तक रहा सेफ्टी का बात, we all have to understand one thing. He is Arnab Goswami. He is not someone who जिसकी गाड़ी को flip कर देंगे और कुछ भी कर देंगे. He is somebody who has a name, who people know, and he will definitely not be touched like any other petty thief or a smuggler or a don. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कसाब का केस हुआ था, उसको बिरयानी तक खिलाई गई थी and all that stuff. Yes, could be true, could be something that was done. Arnab के साथ, I think they cannot do anything stupid, to be very honest. Yes, we are getting restless, no doubt about it, but उस restlessness को हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपना कहते हैं ना analytical side of us, we really need to bring that out. Reason being, अर्नब गोस्वामी को अगर उन्होंने कुछ किया, you also have to understand this time the emotions are running so high. अगर अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो, चाहे वो एजेंसीज के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, this will not go well with the Indian, or let me just say with the entire world. This is something which will definitely blow out of hands for any government. Forget the services, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई हो, उनके अलावा आई थिंक ये गवर्नमेंट के लिए भी, इवन द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज ही इज द अर्नब गोस्वामी. सो आई थिंक वी एज द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, आई थिंक हमें प्लीज पेशेंस रखनी पड़ेगी. वी हैव टू ट्रस्ट एंड वी हैव टू, अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे पता है सम ऑफ यू डोंट इवन लाइक द वर्ड ट्रस्ट and you don't want me to do it, but still I feel, this is my personal take on it, and again this is again my personal understanding. They cannot just keep him in jail, they cannot. Second, they cannot just kill him like that. So थोड़ा सा हमें थोड़ा calm down होके थोड़ा इसको logically practically सोच के देखना पड़ेगा कि कैसे अर्नब
किस चीज में इन्वॉल्व हुआ, कैसे वो इस चीज में फंस गया है, या जो भी हुआ है, आई थिंक दिस हैज टू टेक अ लीगल कोर्स ऑफ एक्शन विच ही विल डेफिनेटली फॉलो द गाइडलाइंस। हम अपने इमोशंस पे अगर थोड़ी देर के लिए चेक रखेंगे, आई थिंक वी माइट बी एबल टू हेल्प द केस। पर अगर हम इसमें इमोशनल होके, अगर हमने कुछ गलत स्टेप्स लिए, हमने अपने लिए तो जो प्रॉब्लम करेंगे करेंगे, they will also create trouble for Arnab as well. So please try and understand this is not the best of times, but we have to keep our patience. We have to calm down ourselves. मैं देख रहा हूँ जहां भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं देख रहा हूँ किसी से भी कोई बात कर रहा हूँ, मेरे अपने मैसेंजर्स पे, there are people who are losing hope, losing faith, losing patience. गाइस, मेरा सिर्फ इतना काम है, मैं यहाँ पर आके आपको जरूर, आई कैन बी ऑन द अदर साइड एज वेल, आई कैन टेल यू guys, let's get down, let's get to the streets, let's do dharne, let's do whatever. You know as much as I would personally like to do something, but at the same time, we also have to keep in mind there are bigger factors at play here. यहाँ पर सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। मैं अभी एक सुप्रीम कोर्ट का, किसी ने मुझे जजमेंट के बारे में बताया कि मीडिया हाउसेस कैन नॉट टॉक अबाउट स्टार्स इन एनी अदर लाइट। अगर आप कोई न्यूज है तो दो, नहीं तो उनके बारे में जजमेंट पास मत करो। वी वर नॉट पासिंग एनी जजमेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच वी फेल्ट, विच वी सॉ, विच वी ऑब्जर्व। बट अगर सुप्रीम कोर्ट भी आके ये मीडिया और बॉलीवुड और उनके सपोर्ट में कर रहा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड there are bigger factors at play. I'm going to start taking people as and when they come. So I see Ashish, I see Naushad ji. So hello everyone. और जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, मैं देना चाहता हूँ, you guys हेलो। need to talk more than me. So yes, Ashish, what's your feeling, please? आई थिंक मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। मैं तो इसको भी पॉजिटिव देख रहा हूँ। Okay, मेरी आवाज that's क्लियर है? थोड़ा elaborate करें, थोड़ा हाँ। बताएं कैसे। 2 दिन पहले मैं मीना दास नारायण उनका यूट्यूब चैनल देख रहा था। कपिल मिश्रा आए हुए थे, 1 घंटे का शो था। उन्होंने खुद बोला था कि एक बार हाई कोर्ट को बेल को या तो अर्नब को रिलीज करो या फिर रिजेक्ट करो, 2 ही चीजें हैं। लेकिन जो भी करो जल्दी से जल्दी करो, बिकॉज वो भी ये भी कह रहे थे कि पीड़ा में आप हैं उतनी से ज्यादा पीड़ा में हम लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बीजेपी में है तो हम लोग पीड़ा में नहीं है। तो ये मैंने सुना और उन्होंने खुद बोला कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में आएगी, जैसे ही हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगा बेल को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी ऑफिशियली। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इंटरवीन कर सकता है, बट राइट नाउ जो मैंने सुना है वो यही है कि कपिल मिश्रा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली इंटरवीन तभी कर सकती है जब हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करे। तो अभी इस पे कोई लीगल, जैसे अभी अभिज्ञा कुशवाहा आए हुए थे या फिर कोई और हो, वही हमारे को गाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा कि ट्वीट से नहीं होगा, ट्वीट से नहीं होगा, ट्वीट से नहीं होगा। हाई टाइम सड़क पे आना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी में आना पड़ेगा और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना पड़ेगा। और सिर्फ प्रोटेस्ट अपनी जगह पे नहीं, किसी मेन चौराहे पे आए, किसी मेन जगह पे आए जहाँ पे मार्केट हो, वहां पर आप प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। और उसके बाद आई थिंक जो अलीबाग जहाँ पे सेशन कोर्ट है, देखिए जो लोग अगर 10,000 लोग खड़े होंगे, 20,000 लोग सेशन कोर्ट के आगे खड़े होंगे, वो प्रेशर डालता है। हमारे 2 लाख, 20 लाख, 35 लाख ट्वीट से नहीं होगा। ये लिख लीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा। वहां पे जाना ही पड़ेगा। और अगर अलीबाग में मुंबई की जनता इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है, तो वो हम लोगों को हिम्मत देनी पड़ेगी। आज दिल्ली में देखिए आप, पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। आज तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस हटा भी नहीं रही है। कल पुलिस डरा रही थी वहां पे। कल पुलिस जितने लोग थे उससे डबल पुलिस थी। पूरी बस लेके चल रही थी पुलिस कि ये लोग कुछ मिसचीफ करे, इनको हम धरे अंदर। तो राइट। मुंबई हो या दिल्ली हो, सेफ नहीं है। हम लोग यूपी में नहीं है, हम लोग योगी के अंडर में नहीं आ रहे हैं। हम लोग बहुत सेफ नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम सेफ रहेंगे, तो वो गलत होगा। वो 100% गलत हो जाएगा। फिर आप ये कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार,
फिर आप कबूतर बन रहे हैं और आप सीधा कह रहे हैं कि मुझे खा जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस आंखें बंद कर रहा हूँ। दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आप कैलिफोर्निया में हैं, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने अच्छा किया, आप डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक घंटा शो ना देख के आप प्रोटेस्ट करिए। 10 मिनट देख के उससे एनर्जी लेके प्रोटेस्ट करिए। 1 घंटा प्रोटेस्ट करिए, जरूर करिए, ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैं थैंक यू। आशीष इस पे सिर्फ एक ही कमेंट करूंगा। एवरीबडी डेफिनेटली हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड आई आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। जितना मुझे पता लगा है, स्पेशली मुंबई में, आपको मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ तक सुनने को मिला है कि देर आर पीपल हु आर नाउ राइडिंग हम्म। कार्स, कारों में हैं वो, अपने किसी तरह अपनी टीम्स के झंडों के साथ, राइट? और वो यही देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे कहाँ हैं, क्या है, और दे आर रेडी टू टेक सर्टेन एक्शंस। तो वाइल आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन कि ये करना चाहिए, पर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो भी करें, जहां भी करें, प्लीज मेक श्योर यू आर सेफ। क्योंकि इस टाइम पे द इमोशंस दोनों तरफ की बहुत हाई हैं। ठीक है, जितना आप एक 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 एज अ कॉमन मैन, मैं या आप या कोई भी इस मूवमेंट में ये सब कुछ करना चाहता है, दूसरी तरफ से भी जो है वो लोग भी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एजेंसीज, देयर आर डिफरेंट पीपल, देयर आर डिफरेंट टीम्स, जो लोग भी अब ऑफेंसिव पे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। यस, आप वहां पर भी ठीक है, मैं कहूंगा पार्शियली, कि डिजिटल प्रोटेस्ट जो होते हैं वह उनकी वो सेम सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी ऑन रोड वाली की है। बट एट द सेम टाइम, यू नो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो करें, प्लीज अपनी एक दायरे में रह के करें, अपनी सेफ्टी को देख के करें, अपनी फैमिली की सेफ्टी देख के करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे, जिस तरह चल रहा है, अगर एक अर्नब गोस्वामी को पकड़ के ले गए, उनको अंदर रख लिया, जिसके पास पावर, जिसके पास पैसा, जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो एटलीस्ट आई वोंट से फॉर यू और आई वोंट से फॉर एनीबॉडी एल्स, बट अगर मैं अपनी ही बात करूं, आई डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी। तो यस। मुझे अपनी एक वो देख के, जैसे कहते हैं ना, अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, मैं वो कहूंगा। फिर भी आई रियली वांट एवरीवन टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ओन सिचुएशन बिफोर यू जंप इनटू इट। यस, यू वांट टू डू पीसफुल मार्चेस। कल हैदराबाद में मैंने देखा कैंडल लाइट विजिल्स हुई। प्लीज गो अहेड, आई वुड ऑल्सो इनकरेज, शांति से जो करेंगे, आराम से करेंगे, गुस्से में आके नहीं करेंगे, दैट इज डेफिनेटली 100% सपोर्टेड बाय एवरीवन। पर जैसे कल आपने दिल्ली में देखा कि अगर वो परमिशंस नहीं है और लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, हालांकि बड़ा फिल्मी लगता है, बड़ा एक मूवी का कोई डायलॉग लगता है, पर फिर भी आपको नहीं पता, आपको रियली नहीं पता कि आप ही के बीच में उनकी तरफ से, दूसरी टीम की तरफ से कोई आके आपका पार्ट बन के और कुछ गलत स्टेप ले दे और सबको भुगतना पड़ेगा, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। कि कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। सिचुएशंस, आप लोग ज्यादा, वो कहते हैं ना, रियलिटी के पास आप लोग हैं, मैं नहीं। मैं यहाँ पर 4 प्रिंट और ले लूंगा, लोगों को, 10 लोगों को और मैं लाइफ पे ले आऊंगा, एंड मूवमेंट को कंटिन्यू करूंगा। आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोग ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा क्लोज हैं। सो प्लीज एक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू। डू नॉट गेट एजिटेटेड, मोटिवेटेड। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको अननेसेसरी मोटिवेट करने आएंगे। उसको मैं मोटिवेट भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पोक करने आएंगे कि यार नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सिस्टम ये, सिस्टम वो। आई अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट, बट प्लीज ट्रस्ट योर ओन जजमेंट बिफोर यू एक्ट। इतना ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं और भी कुछ कहना नहीं चाहता। नौशद जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, I was just calculating what is happening. At the same time, I was watching the astrologer whose name is Rupen R. Shah. He had made some predictions in the middle of October, and they really came true on the 4th of November. So he had, in fact, I was setting it as a comment to most of the YouTube and Facebook posts of Republic. But I don't know whether they paid heed to it or not. And at the same time, the other thing is there were
indications that Dawood has pumped in a lot of money to close and shut people's mouths. That's for sure. So the Yeah. intervention is नहीं, आई there, थिंक but दैट्स आल्सो ट्रू, राइट? आई मीन ये जो पैसों की बात आ रही है, और भी मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लोगों के बारे में लिखा जा रहा है कि वो सब भी इस चीज के अंदर लगे हुए हैं। इनको किसी भी तरह दे हैव टू ब्रिंग देम डाउन। दैट्स देयर होल गोल राइट नाउ। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, the amount of power and money these guys have, you know we have bigger thing. Our strength is in our numbers, right? But अगर वो numbers में, मैं फिर वही बोलूंगा, right? एक साहिल को पकड़ के लेके गए और कितनी देर के लिए कितने लोग चुप हो गए। विभोर को पकड़ा, कितने लोग चुप हो गए। अब अर्नब को पकड़ा, बहुत ज्यादा एजिटेशन है, बट अगर इतने मीडिया हाउस के हेड को भी पकड़ के ले जाएंगे, they are just trying to understand their psychology. They are ready to do anything and everything to curb this, to silence everyone. But at the same time, प्लीज अपना, मैं वही कहता हूँ, आप करें जो मर्जी करें, बट अंडर सम काइंड ऑफ अपनी कॉमन सेंस, अपनी बेसिक सेंस को यूज करके करें। डोंट गेट पोक्ड बाय पीपल, डोंट गेट हाई ऑन इमोशंस। वो लोग चाहते हैं, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट, दे रियली वांट पीपल टू डू सर्टेन स्टूपिड एक्शंस so that people get onto the wrong side, और उसके बाद ये मूवमेंट को एक ब्लैक स्पॉट देके कि ये ही हमें पता था होने वाला है और ऐसे ही होना है। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बट दैट्स माय ओनली थिंग। प्लीज यूज योर जजमेंट, प्लीज यूज some common sense before anybody acts anything, please. there are many things involved other than being the justice for नौशर Sushant. जी, आपकी Now, वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम है, so I don't know if it's me or if everybody can can you hear. hear me now? Yes, much Yeah, better, can you hear? All right. much What I'm trying to say is, uh, Sushant got us together. Sushant got us together for the major cause of child trafficking other than drug abuse. And this is what we have to stand for. And this is the reason why all the syndicate of the gang and mafia members are together pumping in loads of money, because human trafficking is a very big international business. And better. and the government has to have lot of laws in place before taking over the Maharashtra government. That is the reason why they are preparing themselves in the background. Right, Now, we do not understand what is the nitty-gritty about the Constitution of India. correct. Uh, Even the lawmakers have got fumbled at this stage. The greatest son of Ram Jethmalani, Mahesh Jethmalani, could not do anything. He's just passing a remark. General G.D. Bakshi, R.S.N. Singh, Pushpendra Kulshreshtha, everybody went to the President Ramnath Kovind, but they have just presented this application for release. But are they able to do it? That is more important. In case of Yaqub Memon, the secular minority could open the Supreme Court in the middle of the night at 3:45. Why can't they do something for Arnab Goswami? This is my question also. Yep, yep. Why we cannot raise the voice that if for Yaqub Memon they can open the Supreme Court in the middle of the night in the dark hours, why can't Arnab be saved immediately? Yep. That is And very important. very very logical questions, very very relevant questions, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इन चीजों का। अगर हम देखें कि लोग कुछ भी, मैं एक एग्जांपल वही अपना, again, I won't take names, but everybody would understand. There have been people who have done so much, especially from Bollywood, जिनको ओवरनाइट बेल मिलके उनको बाहर निकाल दिया जाता है उनको, और वो अपनी चेयर पे ऐसे बैठते हैं जैसे दे आर लाइक द अंडरवर्ल्ड डॉन्स, एंड दे विल सिट एंड बिहेव विद द पुलिस एज इफ दे रूल इट। और यहाँ पर एक 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 law abiding, I would say, citizen of a country who has such a huge platform and who's got so much respect from people and support,
उसको ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ही इज लाइक बहुत बड़ा कोई क्राइम करके आया है, और बहुत बड़ा, आई नो ही माइट बी। जब तक वो कहते हैं ना, जितने भी हमने एनके सूद से कहे या लीगल एडवोकेट से बात करी है, सबने कहा है till the time it's not proven, nobody is guilty, right? I mean, simple as that. जब तक वो prove नहीं होता है, तो everybody, including Arnab, has the right to be out on bail and not being treated like this. कुछ को लोग question पूछ रहे हैं, can international court of justice? There have been some appeals which have been forwarded. There have been appeals forwarded to our local, leaders as well. But I think it's all about raising the voice. So जैसे कुछ question पूछ रहे हैं मेरे से कि what can we do? So what can we do? One of the suggestions that I can suggest, each one of us, especially मैं US में बैठा हूँ, मैं California में बैठा हूँ. Let me just use that. I'm in California. If you are in say Texas, एंड टेक्सास में भी आप अपनी एक छोटी कम्युनिटी में हैं, जैसे मैं एक सिटी में हूँ, आई हैव मल्टीपल सिटीज, I should be reaching out to my council members. I should be reaching out to my representatives, raising this voice. यूएस में देर आर 50+ स्टेट्स, सारे स्टेट्स में अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कंबाइन होते हैं एंड दे रिपोर्ट दिस टू द प्रेसिडेंट और रिपोर्टेड टू द एजेंसीज, इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरी सिंगल कंट्री में हर एक सिटी स्टेट में जाके अगर हम ये आवाज रेज करते हैं एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर कम्स फ्रॉम द लीडर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, मे बी दे विल हैव टू एक्ट, मे बी। शायद वो अपने लोगों की शायद इस टाइम इसलिए भी नहीं सुन पा रहे बिकॉज they are saying there are other important things. I don't know why this is not important, which is a very shameful thing to say, but this is equally important. This is somebody's credibility, somebody's life, somebody's entire future is at stake. And then that is not somebody who is just koi bhi hai. He has brought up out so much stuff against the wrongdoings in the country. क्लीन अप में इतनी हेल्प कर रहा था हमारी कंट्री के, जैसे वो एनके सूद बोलते हैं मंथन में हेल्प हो रही थी, एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सो आई कैन ओनली सजेस्ट, लेट्स प्लीज डू दैट. I'll let others speak as well. I see Varun as well. Yes, Varun, you want to say something? Yeah. Firstly, I'm heartbroken to see. Till yesterday, at least, I was thinking that we are definitely not moving towards a Syria or a Pakistan, right? But somehow today, I get a feeling that uh, probably we have taken one step towards that. I mean, I may be too hard towards the judiciary, but I have a right to my opinion, and I'm not going against the verdict what was given. But it's really sad to see that. See, the problem here is the even if you speak legally, even if you take it in a completely technical perspective, the case was closed. If you want to reopen a case which was already closed, you're supposed to get the signature of the magistrate. And the magistrate himself, the sessions court, they have clearly said that prima facie this case is illegal. So without even consulting the magistrate, they have opened. The court itself has said it. Now, if the court itself, the flip side of this is there's a small mistake that happened was the bail, according to the law, from what I understand, is firstly you have to approach a sessions court and then you have to go to the high court. Yeah. So if it's rejected. So one small mistake that happened was Arnab's legal team probably went to the high court directly. Now, Yeah. the reason they are saying is because the session, they actually did, I think, apply a bail and they withdrew it because they were not given a timeline. So this is probably one of the reasons why they went to the high court. This is from what I am reading in the internet. So now the high court has given, although they have rejected it, they have given 4 days time. So the sessions court has to decide within 4 days on the bail. But having said that, this is definitely a gross injustice, and the problem here is we should also understand the flip side of this is the court is also bound by the law. But the lessons to take from this is the Supreme Court has the power to amend the law. So
if this gross injustice happened because the courts were bound by the law, then the court should come out and say that, okay, because we were bound by the law, we couldn't do it in that case. And this is the lesson learned, because law also cannot be perfect. It's something that needs to be, refined. So they should come and say, this is the mistake that happened because of the loophole in the law, and they should correct the law. But definitely, by the court's own rulings, it is definitely a gross injustice, and Right. this cannot be taken lying down. Correct. And I think you brought a very good point. I actually wanted to say that earlier on as well. You want to call it a mistake, or you want to call it a goof up, or you whatever you want to call it. जो मेरी भी थोड़ी बात हुई थी लीगल एडवाइस इसके बारे में कि क्या गलत, what was that one thing that could have been done differently, was that the bail should have gone to the sessions court, which for whatever reason it did not go. And agar wahan hui hoti, and this is coming from a an advocate, this statement, I'm going to quote it, that if this would have been gone to the sessions court, he would have received the bail, but that did not happen. So yes, it's very easy to point fingers at our judicial system, but then there are protocols everywhere. हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है. हर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें भी देर इज अ सर्टेन प्रोसेस दैट यू फॉलो. ऐसा नहीं होता कि आज आप एक प्लास्टिक की बॉटल बना रहे हो तो कल आप कहेंगे चलो यार कल हम एयरप्लेन बनाते हैं. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू हैव लॉजिकल प्रोसेसेस, और उसके अराउंड ही चलता है. सिस्टम भी हमारा वैसा चलता है. यस, nobody can defy that कि there are not, it's not broken. It is broken. Every system, everything is broken. We really need to fix it. But at this point of time, the way people are trying to fix it might be too drastic, but could be the need of the hour. So मैं उसको गलत भी नहीं कहूँगा, पर मैं उसको इस तरह से 100% सही भी नहीं कहूँगा. कई बार कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते, एंड आई थिंक वो टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा. पर अभी के लिए आई थिंक लेट्स सी. अभी जो 4 दिन का जो लॉजिक दिया है वो मुझे, दैट इज आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग. उसके लिए मुझे एक लीगल पर्सन की फिर से गाइडेंस चाहिए होगी. ये 4 दिन का लॉजिक क्या है? इफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू टेक प्लेस, व्हाई नॉट टुमारो, व्हाई नॉट टुडे इटसेल्फ? 3 बजे का लॉजिक क्या है? बड़े सारे क्वेश्चंस है. आई कैन कीप ऑन एडिंग माय ओन क्वेश्चन. व्हाट इज दिस लॉजिक फॉर 3 PM? क्यों 3 बजे? सुबह 10 बजे क्यों नहीं देते यार केस? 10 बजे लो, 11 बजे तक हमें पता लगेगा, वी फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, राइट? 3 बजे करके तुम 4 बजे तक करोगे, फिर कोर्ट बंद होता है. यस, आई थिंक यू वांट टू आंसर, मे बी यू हैव एन आंसर फॉर दैट. राघवा, क्या Hey कहना चाहिए? Varun, hey या, Varun, thank you for letting me in. I'm from Boston. ओके. Just woke up at 4:30 just to watch what's going on. I couldn't sleep, honestly speaking. Yeah, And what's going on in India is very disgusting. I think from the day one when Arnab got arrested, I thought it was a big conspiracy, and everyone is involved in this. And I strongly feel that even the BJP was involved into this too, because the reason why I said is that since 4 months when Arnav was kind of taking out all these cases outright, none of their top leaders have said anything, and they have taken any action on the state government, right? And to the point of I have a question about like why High Court has taken like 3 days to discuss this matter, and why can't they just say on the day one say, "Hey, go to Sessions Court. Why are you coming to me?" right. Is it? I see this is a part of whole conspiracy. Yes, I yes, think this is a big conspiracy that they want to shut his mouth or keep him behind the bars. But honestly speaking, guys, I have been to India for almost 7 years, due to some circumstances. But I feel like I'm not. I don't know whether I have to give up my citizenship or just take the citizenship of here, because I'm scared, honestly speaking, to go back to India. If yes, these things come in, like a person like Arnob is been arrested, what's with the common man, right? absolutely. I agree, this and is I this is this is not I've seen like with with Modi government. yeah, Honestly speaking, I was a hardcore Congress from the beginning, from my childhood. My family was a hardcore Congress. We have a leaders in Congress, but I
it changed because of the way things have changed since like 6 7 years. Right. Like I trusted Modi, but he thought it's going to be. He said Swachh Bharat. Is this Swachh Bharat? I don't think so. No, the joke I try to make again, I don't want to be like funny in this situation. जो मुझे सबसे लगता है, कहाँ गया वो आत्मनिर्भर भारत? ये Yes, आत्मनिर्भर है? Is this what we were all hoping for? कि लोग आके अब बोल भी नहीं सकते कुछ, you know? nice. Yes, if he's taken certain pot shots, yes, he should be reprimanded. Definitely, no doubt about it. You know, anybody, not only Arnab, अगर कुछ गलत किया है without any proof, yes, you should be accountable. बट अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों को बात करने के लिए देते हो और वो कुछ देते हैं, बात करते हैं, you cannot just be like, this is like crucifying him for Yeah, actions which others have been doing. And also ये जो केस बंद हुआ है, उस केस को follow a regular course of action. अगर रिया चक्रवर्ती, जिसको लिटरली कहा जाता है कि was actively involved in, and she is scot free in a way, you know, I won't go like to call it scot free, but she's outside right now. yeah. वहाँ इतना हू हल्ला मचा था रिया चक्रवर्ती को लेके कि वो इन्वॉल्व है, ये है, वो है। अगर वो बाहर आ सकती है तो यार इसको क्यों नहीं बाहर आने देते? This राइट? is all. This is all conspiracy, Varun. Yeah. I think this is all conspiracy. And Yeah. how come this Salman Khan gets bail in like in hours? अगेन मैं फिर वही Right? बोलूंगा, एक चीज बोलता हूँ। आज ही में सुप्रीम कोर्ट का, या आज या कल में कुछ आया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बट मैंने अभी ये पढ़ा है कि उन्होंने मीडिया हाउसेस को, they've slapped this on their face कि you guys can provide news around these actors, but you cannot just defame them. You cannot defame Bollywood, which is again a slap on everybody, each of our faces as well. Okay, what they're trying to say is you can give them news around these stars, actors, whatever you want to call them, but you cannot defame them. You know, I'll tell you right now, people can do whatever they want to do after this session, जो भी मुझे कहना चाहते हैं, but मैं सिर्फ ये कहूंगा, we'll follow the same thing which they did to Sushant. Let's have these blind articles. Let's do it. Let's bombard it now. And लोग कहते हैं ना कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं. Now I'm telling you, I'm giving you an option. Let's blind articles दिखो, हर जगह post करो. Don't take names. Don't use any of these names. इनके बहुत सारे हमने नाम्स बना चुके हैं. Let's use those. Let's continue the fight. जिसने पकड़ना है पकड़ो, हमने तो नाम लिया ही नहीं. Right? If this is how you want us to act, this is how we will. But it's high time. So, you know, मेरी तरफ से मैं अपना अभी सिर्फ जो लास्ट चीज बोलूंगा, from my perspective, my agenda is very clear after all this is happening. मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम दैट ब्रेव. बहुत लोग हैं यहाँ पर ब्रेव जो सड़क पे उतर के आके बहुत कुछ करना चाहते हैं, दंगों में या चीजों में इन्वॉल्व होना. मैं नहीं हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट व्हाट आई एम गुड एट इट, आई विल नाउ मेक श्योर आई ब्रिंग बॉलीवुड डाउन इन माय ओन स्टाइल. Yes, We man. will do it. It's a hard time. We need to get this Bollywood crushed into pieces, and Exactly. because this is pathetic. I think they're sitting and laughing now at what's going on. Exactly. We And should they've show killed, their aukat. and They they are have a piece killed. of shit. They have killed Sushant. And Yes. मुझे बहुत हीट मिलती है. पता है, मेरा ये टर्म यूज करना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मत बोला कर, मत बोला. यार बस हो गया, यार बस हो गया. कितने सुशांत लूज करेंगे हम? आई थिंक हमारी भी पेशेंस कभी तो जवाब देगी. बट अब let's do it in our own style. Let's make sure I will enable thousands of these golden buttons जो हमारी वेबसाइट पे हैं to all these brands again. We will make sure कि हम लोग इनको परेशान इतना कर देंगे. हमें नहीं चाहिए यार ये the so-called stars. Let's bring them down to their knees and let's. Yes, बोले पद्मा जी. You're mute. In this would be, hello, Yes, please go ahead. Satyagraha way in this would be to boycott movies again and again, ever and ever, till it is completely cleaned up. Yeah. Yep. Absolutely. Through you, I want to request all the Indian diaspora abroad, just boycott movies. Yep. If they come for shows, see to it that it doesn't take up. Yep. Absolutely. और Already मैं वही बता रहा हूँ, ये they're लोग seeing the बहुत कुछ backlash in भगवान से India. Already they're seeing the backlash in India. Yeah. And I think even abroad, they should start boycotting any movies. Let Yes. it be a newcomer also. Newcomer, maybe a newcomer, but production house, maybe some big shot. Yeah. Yes, That's we have the way been can. doing that actually in here in We US. should. We are not Yeah. following Bollywood anymore.
Yeah, Yeah, absolutely. that's fantastic. That's All fantastic. right. So let me And get Raman ji, जो कि मुझे दिख रहा है कार में बैठे हैं इस टाइम पे और हर बार हमारे लिए कुछ मोटिवेशनल लेके आते हैं। रमन जी, डू यू हैव एनीथिंग मोटिवेशनल? क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं द सेंटिमेंट्स आर वेरी लो एंड पीपल आर सर डेफिनेटली। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वरुण जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप मैं कैसे हैं? एक्चुअली आपका टाइमिंग ऐसा था, मैं कहीं बाहर था तो लगा कि एक बार आपका वो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मुझे दिखा, मुझे लगा कि एक बार 2 मिनट के लिए ही सही, जाना जरूर है। तो एक बिल्कुल सर। कविता उन लोगों के लिए जो बॉलीवुड जाना चाहते हैं, जो बॉलीवुड को सोच रहे हैं जाने की, उनके लिए एक कविता है। आप समझे, इसको पॉजिटिव लें और इस हिसाब से चलें। मेरा तो ये कहना है और मानना है। ये जो कुछ रास्ते दिख रहे हैं ना, ये जो कुछ रास्ते दिख रहे हैं, ये मंजिल तक नहीं जाते। भूल भुलैया हैं ये, इन पर चलने वाले लौट कर नहीं आते। कुछ घने जंगलों की ओर तो कुछ दलदल की तरफ निकलते हैं। कुछ घने जंगलों की ओर तो कुछ दलदल की तरफ निकलते हैं, और कुछ रेगिस्तान में तो कुछ समुंदर पर जाकर मिलते हैं। ये चक्रव्यूह हैं कौरवों के बनाए हुए, जो अंदर तो बुलाते हैं प्रेम, भ्रम और सौंदर्य के बल पर, आने को उकसाते हैं। कदम कदम पर ठग हैं, लुटेरे हैं और कातिल भरे हैं राह में। हजारों लाखों मर गए इन मंजिलों की चाह में। मैंने देखे हैं कुछ योद्धा जो निकले थे इन रास्तों पर मंजिल पाने के लिए। सुना है कभी कभी दूर से पुकार आती है घर वापस लाने के लिए। तुम भी अगर कुछ बदल सको तो बदल के देख लो। अंधेरा, बदबू, सड़न भरी है थोड़ा आगे जाने पर, चल कर देख लो। ये माया के बनाए मार्ग हैं, पर माया नगरी तो मंजिल ही नहीं। ये माया के बनाए मार्ग हैं, पर माया नगरी तो मंजिल ही नहीं। स्वयं के विवेक से समझना है, परखना है क्या गलत और क्या सही। I will suggest everyone before joining this industry and promoting this industry. Thank you. बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट पोएम। एंड जैसे कि मैंने कहा, इंडस्ट्री को तो आज इस सेशन के बाद, आज जो सेशन हुआ था और जो हमारी पहले भी बात हुई थी, थोड़ा सेशन से पहले भी हमारी इंटरनल कुछ लोगों से बात हो रही थी। आई थिंक मैं तो बिल्कुल अब क्लियर हूँ। जितना मैं लोगों को रोकता हूँ फॉर द कोई भी गलत स्टेप, या गलत नहीं कहूंगा, कोई भी ऐसा वायलेंट स्टेप या डिसीजन लेने से, आई वुड इनकरेज देम 1000% टाइम्स राइट नाउ। अब अगर हमने बॉलीवुड को नहीं गिराया तो शेम ऑन मी, शेम ऑन यू इज सर हाउ वो आई तो होगा, वो तो होगा। हर शेम ऑन। इंसान इस चीज को सोच रहा है और कर रहा है, कर रहा है। तो आई वुड टेक योर लीव। थोड़ा सा मैं आज गाड़ी में हूँ तो बिल्कुल, थैंक यू मिलता सो हूँ मच। फिर जल्दी। थैंक एग्जैक्टली, यू। बहुत जल्दी। ऑलराइट, कुमार सत्यम जी, प्लीज, व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब वरुण जी, मैं यही कहना चाहूंगा, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दिनकर जी की कविता की वो लाइन याद आ रही है कि अब याचना नहीं होगा, अब रन होगा। और मतलब अब स्थिति वैसी हो गई, मतलब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम कि मतलब जस्ट फॉर कि एक केस जो है क्लोज हो गया है, और पुलिस जिस दिन चाहेगी उसको ओपन कर लेगी, किसी अथॉरिटी से परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड आप जाके उसको अरेस्ट कर लोगे, और फिर कोर्ट अगले दिन बोलता है कि ये अरेस्ट ठीक है, जायज है, आप इसको अरेस्ट ही रहने दो। मतलब क्या चल रहा है, क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है टोटली। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूँ। कुछ बहाना भी नहीं मिल रहा मुझे कि मैं ऐसा, मतलब कौन सा कानून में लिखा है कि सडनली वन फाइन डे समवन डिसाइडेड कि भाई आज इसको उठा लेना है, घर से गए और उसको खींच के उठा लिया, जेल में डाल दिया, और 5 दिन सुनवाई हुई, और कोर्ट क्या कहता है कि आप सेशन कोर्ट चले जाओ। तो क्या मतलब कोर्ट ही कोर्ट दौड़ते रहे बंदा, और कोई डिसीजन उसको ना मिले, वो बाहर आने के लिए कोर्ट में गया था, या फिर वो ये सुनने आया था कि किसी और कोर्ट में चले जाओ। तो मतलब मैं तो भरा हुआ हूँ इस वक्त, और मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं तो बोलना पड़ेगा आके। मतलब ये मतलब क्या कहूँ मैं इस पे, बिल्कुल। कहाँ जाए बंदा, क्या करे, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। और आप ही नहीं है सिर्फ अकेला इसमें सत्यम जी। आई हैव स्पोकन, और लास्ट में वही बोल रहा हूँ मैं, एक हफ्ते से जितने लोगों से मैंने बात की है ऑफलाइन, ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू तो मैं करता ही हूँ, यहाँ के भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
I have spoken to people on video calls. I've spoken to them on audio calls, chats, messages, DMs. मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं किसी को क्या बोलूं और क्या खुद क्या करूं, राइट? कि हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारे कुछ जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल लाइक अस शुड जॉइन द पॉलिटिक्स। वो भी पता नहीं कितना आसान है कितना नहीं है, हमें ऊपर आने भी नहीं देंगे, वहां पर भी आई थिंक पॉसिबिलिटीज कम है, वहां पर भी ग्रुपिज्म, गैंगिज्म, फैमिलिज्म, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वहां अपने ही फैमिली के लोगों को ही घुसाना होता है, उनको भी। तो आई डोंट नो अभी सोल्यूशन क्या है। आई हैव नो क्लू। यस, बोले जी, पद्मा जी इसका आप कुछ कह रही सॉल्यूशन हैं। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना बंद होना होगा और ऑर्डर्स वही लेने होंगे जो सच में भलाई के लिए है। यही मानता हूं मैं तो अब। राइट। यस। I used to be a die-hard Modi fan in 2012, but his quiet has really rattled me. Very disappointed. I have decided either Arnab comes forward with a new party, then it is okay. Otherwise, it is going to be Nota and Nota only. Henceforth. Many Modi fans like me are feeling the same. I hope this message goes to BJP. I hope it does. We are very Yeah, disappointed. I think No, no, no. that's a message which is coming out loud and clear. But at this point of time, I would say, yes. Reserve to comment. Bolo Ashish. मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है। बीएल संतोष और अमित मालवीय ये ट्विटर में हैंडल करते हैं, सीनियर लीडर्स हैं और ये आईटी सेल को हैंडल करते हैं। तो आप Right. इनको टैग करके अपना संदेश दें और अच्छे से दें, कोई गलत लिखने की जरूरत नहीं, जैसा वरुण ने बताया। Exactly. आई रिपीट, मैं बीएल सीधा संतोष और अमित पीएमओ, मालवीय। पीएम, अमित शाह जी तीनों को मैं ट्विटर पे वेरी पोलाइटली लिख चुकी हूँ कि आई हैव बीन अ बीजेपी सपोर्टर एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड करके पोलाइटली बोल दिया मैंने। तो पता हमारी, नहीं क्या करें। yeah. So let me actually take this opportunity. Give me 1 second. What I'm going to do is, हम लोग भी ये कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं। Let me do this. Let me share it right now publicly on this live. We are also revisiting and we will be revisiting the content also. तो अगर आप लोगों को भी कुछ फीडबैक है और आप लोग भी कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं कि क्या कंटेंट और ऐड करें, आई थिंक मैंने ये कल ट्विटर पे लिखा था। ये हमारी वेबसाइट है विच इज westandforjustice.org। यहाँ पर अभी अर्नब के लिए this counter is a manual counter, so we will be checking it. I think last time I checked it, there were about 18,000 emails already sent. So I will update this counter. ये manual counter है. So 18,000, frankly speaking, it's not that bad, but it is not that good. मैंने सोचा था कि ये कम से कम 30-40,000 होगा। Guys, all you have to do is यहाँ पर there is a button which is, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या है golden button. This is that button. You click on this and it will open your email. इस email के अंदर it will directly go and I'll very clearly list out, ये email addresses आप देख सकते हैं. It is the PMO office. It is Amit Shah's email address. It is also Amit Shah's secretary, personal secretary email address, and we also have the governor of Maharashtra. Maharashtra. So we have Governor of Maharashtra, we have Amit Shah, we have the Prime Minister office, and we have the content. All you have to do is just hit this button. That's it. It will open your email. Please go ahead and do this. Nobody is stopping you. Next, coming on this page will be some more buttons. हम लोग फिर से वो सारी जो movement थी around all the Bollywood boycott thing, we are going to bring up all those buttons back. We will make sure we bombard all these companies who are still using them as brand ambassadors. Please go ahead and just keep on hitting those buttons. जैसे मैंने कहा, let's make sure we just bring them down completely. Yes, Noshir ji, please बोलें. We need to also tag the Advertising Council of India and complain to them about this priority issues like banning those unwanted elements of Bollywood.
We Okay. can thank the entire council. Okay. Yeah, I think the next thing that I'm thinking right now, and we will work on it, is we will be doing something for Twitter as well. Because Twitter ke liye bhi, I think what we'll do is we'll start putting up certain tweets for you all to kind of start copy pasting, and that way we will have those IDs for you guys. Uh, Puneet, I think you are not audible. I can hear some muffling, but I cannot hear you. Yeah, we cannot hear you, Puneet. ऑलराइट सो हम ट्विटर के लिए भी बहुत जल्दी करेंगे बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द ईमेल एंड अगर आप लोगों को भी कोई और आइडियाज हो प्लीज शेयर इट द ईमेल एड्रेस आपका मेरे पास मेरा नंबर मेरा ईमेल एड्रेस सब इज पब्लिक सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट विपिन जी यू वांट टू से समथिंग Yes, hi Varun. Hope you're doing well, man. यस सो फार सो Good, गुड good. Really heartbroken, man. I was following the news since morning today and not feeling good right now. I was expecting the release of Arnab, but somehow I think it's a personal vendetta, ego, and personal attack on him and his family for all the good things and the right things that he has stand for. So, I don't know. Today, even I was watching this news. There is this ST bus driver in Maharashtra who has committed suicide. Then the letter also he has mentioned that this government is responsible because they are not paying him the dues and the salary. My question is that will the government act on those culprits who are responsible for letting this suicide of these bus drivers the way they were after Arnab? Will these guys be also behind those culprits behind the ST drivers' suicide? that's a topic I don't have any information right now, so I don't want to comment, but I'm Yeah, pretty sure, I'm really pretty sure that if there are concrete evidences and everything, the system should. But this time जिस तरह system चल रहा है, I yeah, am very skeptical around everything and yeah, anything that's happening in around us. yeah. I've never seen hypocrisy at this level. This is the peak of hypocrisy in my life that I've seen in the functioning of a government which does one thing for one person and another way of behavior for another person. Yeah, and you're right. I mean, this is सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज रियली शॉकिंग कि किसी कंट्री की ऑपरेशंस में, स्पेशली अगर मैं किसी Yeah, और भी ऐसी कंट्री को देखता हूँ, राइट? आई मीन, आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विद एनी ऑफ दीज यू नो अगेन आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ टर्म फॉर दीज कंट्रीज, बट ऐसी yeah, ऐसी yeah, कंट्रीज हैं जिनके बारे में बात भी ना की जाए तो अच्छा है। पर yeah, ऐसी yeah, कंट्रीज के साथ हमारा कंपैरिजन होता है कि जहां, like, I'll just compare it with US, right? I mean, yeah, we want to be the next superpower, we want to be the India, and is yeah. this how we will go there? I don't know. Correct. I have Yeah, my innovations. So again, let's I mean, keep the patience, let's keep the honesty around ke shayad, yeah, but at the same time, yeah, everybody is losing patience, but let's take sure. certain actions instead of just Yeah, talking about it. Let's just focus on certain actions. Let's yeah, focus on those actions and execute those things. I think yeah, एक एक करके हमें ही करना पड़ेगा. I don't think yeah, system में अभी वो power है जो हमारे में है. yeah, yeah, Yes, yeah, Varun. Yeah, so Varun, see, what I would like to tell is you need to see also the good part of this, the good side, the power of common man is also something that has been proven in the recent past, right? We saw what happened to Sadak 2, we saw what happened to, we saw people, celebrities coming on YouTube and literally they begged to watch their films, all right? I'm not taking names, but we know who they are, right? So which means, what does this mean? This means that the power of common man can be exercised, right? We have proven it in the recent past, right? So I'm just trying to, I'm not giving you hope, I'm telling you fact. This is a fact. The power, we are not still, I did say that we moved one step towards Pakistan, but we are still not Pakistan. We are not still not Syria. So we still have people with the will. It is just that we need to create awareness among our own fraternities first. That is most important. Stop respecting those people who ridicule you for even if they don't support, it's okay. But if somebody is ridiculing you for fighting for a cause or for contributing towards a cause, then stop respecting them.
in the first place. So, and it is just that you need to gather more number of people who have the will. That's all. We have seen, we have proved it in the recent past that this is possible, right? After SSR case has just, I mean, after we saw what happened with Sushant's case, uh, we saw the public proved it that if they have the will, then you can definitely make it, right? Right. You just have to And be I consistent. just want to just interject 1 second. So it looks like there are people in the chat. So Uncle Miracle, please come online. Let's hear you out. I would love to understand. What are you? It's not the case. I am giving you an invitation right now, so it's not about me not liking you. It's not the case. आपका network का हमेशा issue होता है. I would love you to join right now, and let's talk on the live. And I have never shied away from anything. Any questions? So I would give you all the opportunity. So please come in. Yes, common man. आप common man की तरह आए हैं. Whatever you want to say, please go ahead. You are mute. Tell me, Varun sir. Yes, sir. Sir, can you hear? Yeah. Okay. First of all, I'm very much thanks to you because the way you are doing, the way you are bringing all the people together from around the world, really hats off. Varun sir, I am watching from long time, very long time. The way you are doing, really, it's hats off, boss, because you are connecting from all the world people regarding all this. These are all the things going on, sir. सबका मन तो बहुत उदास है, सबका मन तो बहुत दुख है, तकलीफ है सर. मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन. आई डोंट नो हाउ यू पीपल विल एग्री विथ मी, कितना आप मेरे से सहमत रख सकते हैं. ये शो खत्म होने के बाद भी सोचिएगा सर इस बात को कि एक कॉमन मैन क्या बोल के गया. सर, क्या हम लोग सचमुच आजाद हुए हैं इंडिया में? क्या सचमुच हम लोग को आजादी मिली है? सर, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता सर. नहीं सर, किसी को भी नहीं लगता. नहीं सर, नहीं सर, हम लोग को आजादी नहीं मिली है, नहीं मिली है सर. सीधा गांव का लड़का जाकर के बॉम्बे में इस तरह से अपना नाम कमाता है, उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, और जो उसके आवाज उठा रहा है उसको इस तरह से प्रताड़ना दिया जाता है. कहाँ है इस देश का कानून? कहाँ? सारा दुनिया पीएमओ को रिस्पेक्ट करता है. आज पीएमओ जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? गृह मंत्री जी क्यों नहीं? कोई हाँ बोल रहे हैं सर, ये बात नहीं, बोल रहे हैं, लेकिन व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप? कहाँ है इस देश का कानून सर? नहीं सर, हम लोग आजाद नहीं हुए सर, नहीं सर. सर, और एक बात बोलना था अभी जस्ट नाउ. आई विल नॉट टेक मोर टाइम सर. बहुत दुखी हूँ सर, बहुत कुछ सोच के आया था सर के साथ ऐसा बात करूंगा, लेकिन सर बहुत दुखी हूँ सर. सर, अभी हम लोग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, हाउ व्हाट विल डू. सर, एक सवाल है, और भी एक सवाल है. सी, एक कॉमन आदमी के लिए, हम जैसा आदमी के लिए, कोई भी नौकरी पाने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ता है सर, कम से कम ग्रेजुएट. और यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड इन दिस सब्जेक्ट, देन यू विल क्वालिफाई फॉर द जॉब. बट इस देश में एक नेता मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? एक अंगूठा छाप मंत्री बन जाता है, पार्लियामेंट में माइक फेंक के झगड़ा करता है, कॉलर पकड़ता है, और वहीं आईपीएस बड़े लोग उसके अंडर में काम करते, क्रिमिनल जेल से इलेक्शन लड़ता है, पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, वही सबको ऑर्डर देता. तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? यही है सिस्टम, यही है हम लोग का संविधान. उस संविधान में ऐसा बात नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी क्वालिफाइड टू बिकम एनी मिनिस्टर, और उस लोग को चेंज करना नहीं मांग रहे. सब पड़े हुए पार्लियामेंट में क्रिमिनल, एक से क्रिमिनल, जेल से क्रिमिनल इलेक्शन लड़के बाहर आकर के जितना केस पे सब बोलो, उस माइंड में क्या होगा? आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए. मैम, यहाँ के सब बैठे हुए हैं सर, कोई भी बड़े बहुत गिने चुने क्वालिफाइड पर्सन और इन पार्लियामेंट, जिसको बात करने का तमीज नहीं है, माइक फेंक के फाड़ चीर करके, ये सब क्या सर? हम लोग आजाद हुए हैं? नहीं सर, हम लोग आजाद नहीं हुए सर.
Right. Now your call. Now नहीं your नहीं, call, sir. बस बिल्कुल मेरे सही को कह इतना रहे हैं। बोलना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लग भी नहीं था। रहा नहीं कि सर, हम आजाद हो चुके हैं। एक्चुअली नहीं हम सर। बात कर रहे थे, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ। हम लोग फील ये करते थे कि शायद काश इस टाइम हम अंग्रेजों के ही शायद रूल में होते तो शायद बेटर होते। यहाँ तक एग्जैक्टली, हम लोग नौबत पे आ चुके थे। एग्जैक्टली सर। हम शायद बेटर होते, कम से कम कुछ एक्शन होते, कुछ डिसीजंस होते, कुछ रेजोल्यूशंस होते। जिस तरह अभी चल रहा है, आई डोंट थिंक ये इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो at this point of time, I agree 100% with you. It's really a pity जो हमारी सिचुएशन है उस पे हम सिर्फ अफसोस अभी मना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, हमें इंडिविजुअल लेवल पे आई थिंक let's do it. Let's take some actions on our individual level. Uh, of course, fighting the whole bigger system might not be that easy, but we have to start from somewhere. We have to, और अपना एक्शन कहीं शुरू करना पड़ेगा. All right. Let me ऑल before I ऑल let Uncle Miracle talk, let me just Padma Shri, you left Vibhor in trouble. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी बड़ी बार एड्रेस कर चुका हूँ, और अभी भी आया तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे डाल दिया. पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस या किसी भी तरह के क्वेश्चंस या कमेंट्स मैं आई एम नॉट गोना शाई अवे फ्रॉम. सो आप अगर प्रोवोक कर रहे हैं या पोक कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. इट एक्चुअली इनकरेजेस मी मोर. सेकंड थिंग, जहां तक आपने बोला यू लेफ्ट विभोर इन ट्रबल, मैंने विभोर को कहीं नहीं छोड़ा, मैंने उसको किसी प्रॉब्लम में, ट्रबल में नहीं डाला, और ना मैंने कहीं उसका साथ छोड़ा या साथ पकड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं था. He is a Supreme Court lawyer. He took his own decision to do whatever he wanted to do. He was on the platform. We did few things. Uske baad he was the one who got under the arrested and all that stuff. Uske baad हमें ही उसके basis पे जो उसके साथ हुआ, हमें भी धमकियां मिली, हमें भी, और कुछ धमकियां तो पब्लिक धमकियां हैं, तो ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि आप लोगों को नहीं पता. आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको भी वो धमकियां सुन जाएंगी, दिख जाएंगी, जो हमें पब्लिकली भी मिली हैं और कुछ ऑफलाइन भी. एंड ऑफ द डे देयर वर सर्टेन रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्टेन पीपल रिलेटेड टू विभोर, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, जिन्होंने मुझे और बहुत सारे लोगों को यहाँ तक कह दिया था कि डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, डोंट टेक हिज नेम. फिर भी मैं अपने सेशन पे आता हूँ, आप जैसे लोग क्वेश्चंस डालते हैं, और मैं फिर भी वो उठाता हूँ, हालांकि मुझे मना किया गया है कि मैं नहीं बात करना, मुझे नहीं करनी इसके बारे में बात, बट आई एम नॉट गोना शाय अवे. सो अगर आप लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ कमेंट्स डाल के आप किसी को प्रोवोक करके कोई नेगेटिविटी फैलाएंगे, स्टॉप डूइंग दिस. यही एनर्जी अगर आप ये चार जो जो जिन्हें जिन्हें मैं भी एक कीबोर्ड वॉरियर कहता हूँ, अगर आप ये चार वर्ड्स यहाँ लिखने की जगह ट्विटर पे जाके किसी बॉलीवुड स्टार के बारे में लिखते हैं, आई थिंक वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा rather than talking about me. So stop doing this and let's focus on something better in life. मेरे को bring down करके आपको कुछ नहीं मिलेगा. If you have to bring down somebody who's doing some crime against you, our country. Be a nationalist. अपनी country से प्यार करो थोड़ा, उसके बाद लोगों के ऊपर fingers उठाओ. Anyways, so enough of your visibility. ऐसे लोगों को I think I will stop giving more visibility going forward. But thank you so much, Ankita. While I have people like these, I have people like you. So I really appreciate. All right. Yes, Uncle Miracle. बहुत देर से बहुत सारी चीजें लिख भी रहे हैं, and you've been trying to reach me. Unfortunately, yes, we've not been able to talk because of whatever reasons. But let me first clear one thing. You've written few things in the chat that I would not like you. I like everyone till the time you are not against my country. I would love every single person. अगर आप country के against कुछ बोल रहे हैं, yes, then I don't like. But please go ahead. Whatever your thoughts was, please go ahead. Hi, SSRians. Can you hear me? Yes. Yes. So, I'm not against anyone. I'm not against any of your beliefs. All right. But from the day one, or from the beginning, since I had a connection with SSR, the things which he went through in his life, several of them happened to me. Okay. So
That's what got me attracted to this. Actually, I'm not a, uh, movie fan. So whenever I've seen SSR, just maybe a few seconds when I'm flipping around with the channels, I've always thought that, oh, he looks like to be a good guy. Forgive me that I have shaved my head because I've heard there are a lot of corona cases spreading over here. So I keep not going to places where it's crowded. So I get my hair trimmed over here with a trimmer. What I would like to tell you all is, from the beginning, I used to say, please don't go religious. Let me explain that. See, like SSR, even I had times when there were a lot of very dangerous enemies around me, and they never let me work. Okay? I used to always, wherever I am, whichever job I am in, or at whichever clients I'm with, I used to look up and just keep being grateful to God for whatever God had given me. Okay, there's always difference between God and religions. People who go away from God get separated with religions and languages and a lot of other discriminations. If you're going to deal with such big forces, you need to have God's blessings. If you're going away from God, you will not get it. So here it is. We SSRians wanted justice to be served. Now, if you're going to look at, if you're going to depend on any agencies, see, even there are people in these forces influencing them, right? Maybe directly, maybe indirectly, maybe even they are threatened of their lives and their relatives too, or their own loved ones. So you should understand their stand too. That's what I would like to say from my own experiences. So if you're dealing with such kind of forces, I would say do not go religious. If you would like to, please look into the timelines of any successful person, any successful respected person, not the people who came through the back doors by doing a lot of crimes, cheating, injustice, and a lot of things. Don't look into their timelines. They've all come through the back doors. If you look into the timelines, see, when people are desperate, in desperate emergencies, for example, let me say, there is a saying that a lot of miracles happen in hospitals. You can unmute yourself. I don't want to be a radio over here. I'd like to have an interactive session. See, why do they say that a lot of miracles happen in hospitals? Do you see any religious things hanging over there in hospitals? No, during desperate emergencies, people look. All right. Uh, looks like we lost you. Okay. Yes, please. SSR. Yes, go ahead while we get him back. You're mute. Okay. So this is Sunita. Yeah. Can you hear me now? Yes. Yes. Oh no, I'm not mute. This is Sunita.
Yeah. Can you hear me? Hello, Yes. I had an issue with the internet connection here. Okay. So Yes. I am watching your show from first day, and I followed Vibhor also. And I want to tell one thing. I'm sorry. See, हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम गलती कहाँ पर करते हैं कि हम जब वोट देने जाते हैं तो जैसे दिल्ली में बोला कि सब कुछ फ्री मिलेगा और हमने वहां पे वोट दे दिया। होता क्या है कि कुछ भी चीज चेंज करना होता है, हमें वोट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये नहीं है कि बीजेपी को सब कुछ सारे अधिकार मिल गए हैं एंड बिकॉज दे आर इन द लोकसभा पावर दे कैन चेंज एनीथिंग ओवरनाइट। बीजेपी के यदि विधानसभा में भी बीजेपी हो, लोकसभा में भी बीजेपी हो, देन यू कैन सी कि हमारे चेंजेस कितने फास्ट होते हैं। पहले कांग्रेस थी, इन लोगों ने पूरा करप्शन के हिसाब से अपने सारे लॉ पास करवाए। ओके, जड़ें इतनी मजबूत हो गई है और अब चेंजेस करना चाहते हैं तो वोट्स नहीं मिलते हैं। अब सोचो जब 370 पास किया था तो 370 कैसे पास किया था? अमित शाह को सोचना पड़ा था कि क्या करना है। वो आए विधानसभा में, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और 2-3 कांग्रेस वालों ने फेवर किया 370 का, तब जाके 370 पास हुआ। लोकसभा में अपनी मेजोरिटी थी। और लोकसभा में हमारी Can you switch off your screen, the other screen that you are playing in the background? जी, क्योंकि आपको echo आ रही। लाइट ऑफ कर देना। या ओके, सो जब हम वोट दें, या लाइट की बात नहीं कर रहा मैं लाइट की बात नहीं कर रहा, जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है एक और आप ही का वीडियो, आपकी आवाज जो आ रही है रिपीट, वो आप उसको बंद करेंगे? रिपीट कहाँ से आ रहा है? Are you watching it somewhere? Okay. Looks like she's trying to fix it. Yes, Uncle Miracle, please continue. I think we lost you in the middle. Yes, I had some internet issues, internet connection issues. I'm sorry. So No worries. what I was trying to tell you, even in hospitals, all right, there are no religious things hanging over there, but people close their eyes during those desperate emergencies. They even look up and they call upon the highest God. They call upon the God, whoever it is, and miracles happen over there. See, even for Sushant, he was in desperate times. And I'm sure that he is called upon whoever the God is, the highest God, or the real and original invisible God. That's when all these miracles happen to him, like getting into movies, even though he cannot get in through the back door because he's not kind of a guy like that. Right? If you can look into the timelines, if you can look into the videos and things like that, those times, we can see that whenever he started being too religious, he started getting into troubles in his life. Look into those videos and check. I didn't make those videos. I had to search for it because my responsibility, or my God-given responsibility from my very young age, was trying to find out how miracles happened. So I'm talking to you from that aspect. Okay. So even Mahatma Gandhi knew it. And he rested
respected people. He never went against anyone, did he? But he had those awesome, amazing principles, rules, which were there inside him, which were appreciated by a lot of people around the world. That's why he is called as a great person. Even anyone, if you can just look into, whenever they possessed those amazing qualities that no man can ever imagine, they had the direct link from God. And whenever they went religious, they had troubles. They were in troubles because you're dealing with such huge forces around you. Okay. See, let me tell you a few things. In religions, for example, if you take Christianity, okay, if you take those, testimonies, those old respected testimonies, it said about who God is. Nobody has seen the God. Nobody has seen the original God. But now people say that, such and such prophet is God. That's totally wrong. But whenever there were times that they used to stick on to that particular God, the original God, whichever is mentioned uh, in the what do you say, in the scriptures, they had awesome and amazing miracles happen. See, Sadhguru once said that the concept of God came from abroad. So why do you bother about that? Okay, so there's nobody who can define who God is. Nobody's seen God. If you take any scriptures, it's not said that you need to look into any tomes, okay, and pray towards that. It's Okay. never said I that will have to so cut and you so. short. Sorry again. I will have to cut you short right now. Looks like I think we will need to have a Zoom meeting separately. At this session, there are people who are waiting. I think what they are also not liking is, the concept. What I will do is I will send you a Zoom meeting for tomorrow. I will have few people who are more kind of knowledgeable and experienced. Let's talk about this. Let's record a session and let's post it on the portal. I think that will be great. Okay. So sorry, apologize, but I really appreciate what you're saying. So I'm gonna take I all of know you. people cannot They are all accept it. more I know people demotivated right cannot now. They're demotivated right now because of what has happened. And let's just focus for the next 15 minutes that I have. I really want to focus more on Arnav and that topic. So I really appreciate your comments, but we'll talk about it. Yes, I Sunita ji, understand. please go ahead. Yeah, Thank you so Varun. Thanks. Varun, sorry, I couldn't come for 2, 3 days because it was on Karwa Chauth, when I woke up, much. 1:30, I want to just have a sip of water. Yeah, And I saw the live, I couldn't join because I saw you guys and I saw the way they drag Arnab. They are monster, Varun, yeah, and the way they were holding his trouser belt and everything. And you won't believe me. I couldn't sleep, and I was awake. I'm sorry. I never cry on your show, but first time, because I keep everything inside. And you won't believe me, Varun. I called the Raigad police station and I was talking to, if they are listening this one, I was talking to someone called someone, and I told him, shame on you guys. You are actually behaving like a monster, because I'm not afraid whosoever they are, And then I spoke to a policeman and I said to him, I said, why did you went to his house? If there was any issue, you could have asked Arnab. He was very cooperative with you guys. And you are torturing him. You're torturing his wife and his young kids. This is, you're wearing a uniform. We are behaving like a monster. And then I was telling him that please leave him, let him go home. And then he was telling me, oh madam, we will the court has to decide. I mean, this is ridiculous. And also, Varun, I'm trying to get in touch with the international. I asked my husband to find out if we can get a human rights
from here, from UK. I got their number. I will speak to them today, because I want international human rights to intervene, and stop this, because they are like monster. And whatever ma'am, I was listening to this ma'am, and she was talking about, I know Modi is the one who's got the power. You see, before something happened to Arnab, you guys gonna be just crying. You see, I have been trying to call everybody. Varun, at the moment, we just want Arnav to be at his Yeah, home, because yeah, it's very easy for us to say, oh, he's sitting there, Modi got this much work, Modi got that much work. Think at his position, he's inside with the monster, and he's dealing, every second, and he was pleading for his life the way he was begging. I have never seen Arnab like that. I called him, Varun, on a live show, and I spoke to Arnab, and he's such a wonderful person, such a wonder. Only thing is the people don't like, because he's open, he whatever is in his heart, he just say it. And he's fighting for the truth. Is you will find very few people who actually come out in open air and fighting for the justice, like for corruption and everything. So I mean, if Modi ji is listening this one, I can just say that Modi ji, Amit Shah, please get up and do something before it's too late. Because I will tell you, Varun, whether I married in Gujarati family, I will be very, very honest with you. Gujaratis are bikaniya, they say they are bit scared. When reality come for fight, Varun, they hide. They don't fight, you see. But this time, Amit Shah and Prime Minister Modi has to get up and do something about it, because Maharashtra government is not above Modi. That's what I want to tell Mr. Modi, that you can't do that. You have to protect Arnab. You have to. I mean, he's got a third, and now they send a FIR to his wife and to his son. It's ridiculous, isn't it, Varun? right. We are not free, Varun. India is still, we are slave. I can literally We got, answer this. I want to answer that what she is saying. Can I yeah, answer that? Sure, sure. yes, ओके ma'am. मैं हिंदी में बात करूंगी, हाँ जी। बोलिए मैम, चलेगा ना? हाँ, चलेगा, तो बोलिए बोलिए। हाँ, मैं एक्चुअली फर्स्ट डे से फॉलो कर रही हूँ। मैंने कॉल सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं लोगों को सुनती थी और मुझे लगा कि मैं जब बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि क्या ये ओवर स्मार्ट की तरह बात कर रही है। लेकिन आज मैं हिम्मत कर गई हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ या बिलो हूँ, आई डोंट नो, बट दैट सर्टेन थिंग्स एक्चुअली आई थिंक हम लोग कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कॉल बोला मुझे कि मैंने रायगढ़ पुलिस को कॉल किया। अब आप हाँ, सोचो मैम, आपने रायगढ़ पुलिस को कॉल किया, बट रायगढ़ पुलिस खुद कल्प्रिट है, उनको मजा आ रहा है उनको टॉर्चर करने में। तो हम जब कॉल करते हैं तो उनको और मजा आता है कि नहीं हम मैम, लोग को बट भी हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं मैम, हाथ तो जोड़ सकते हैं। उनको हाँ, ये तो याद दिला सकते हैं कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, जो शपथ लिया उन्होंने, वो सब they यहाँ पर should follow नहीं है। that, ma'am. I never told Varun, isn't it? Whatever I do, I just stay behind. Varun knows. Whenever I came for 2-3 minutes, यस, and ma'am, it's you need to have a guts to call people, you see, and ऑफ talk. कोर्स सी Yes, मैं आपको but बता how many people they're gonna put inside the bar? How many people they're gonna kill? ओ And यू डोंट नो देम। उनका but देखो, मैं क्या I सोच know, रही हूँ, but ma'am, मोदी जी को करना पड़ेगा. वही मोदी मैं जी बता रही हूँ, cannot वही keep मैं बता quiet. रही हूँ। हम मोदी Simple. जी को दोष देते हैं और हमारी गलती कहाँ पर है? ओके, हमारी गलती कहाँ पर है? जब हम वोट देने जाते हैं, स्टेट का जब वोट होता है, तो अरविंद ने बोला फ्री वाटर, फ्री फ्री फ्री। हमने अरविंद को वोट दिया, उनके लोग विधानसभा में आए। लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है, विधानसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है। तो कितने लोग पास जब करवाने होते हैं तो विधानसभा और लोकसभा दोनों में वोट्स की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के हाथ में है। मोदी जी जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी ने पेपर साइन कर दिया और
सब कुछ लाइक ओ जादू की तरह हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ डेमोक्रेसी, कांग्रेस को पास करवाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर भी है, बाइडेन आ गए हैं, ओके, लेकिन आई थिंक कांग्रेस के अंदर मोर आर रिपब्लिकन्स आर गोइंग ऑन, सो उनको बहुत टफ होगा रूल्स चेंज करने में, इतना नो इजी मैम, नहीं सॉरी होगा। टू, मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ मैम, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोकसभा, वी डोंट वांट टू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट? नहीं तो एंड फिर हम गलती मोदी करते जाएंगे और हम बोलेंगे नहीं, मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैम, मेरे को रेस्पेक्ट है मोदी, बट व्हाट आई एम सेइंग, मोदी जी कैन सी द वे अर्नब हैज बीन टॉर्चर्ड, राइट? यस, और ही मोदी कैन जी कुछ नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, समवन। राइट? मैम, मैं इफ बताती हूँ समथिंग मोदी जी हैपन क्यों नहीं कर सकते। अर्नब, ma'am, Modi ji is a prime minister and prime नहीं minister कर got सकते, that ट्राई power. टू अंडरस्टैंड, वही मैं कह रही हूँ। आप नहीं मैम, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सिर्फ हम लोग जो क्लास 10 में जो I पढ़े थे ना, respect the prime minister, but ma'am, here Arnav life is very important. That's what मैं we want. बताती हूँ, मुझे मालूम है आप इमोशनल हो गई हो, एंड आपको नहीं मालूम होगा, अर्नब जब गया था, मैंने यहाँ पर पोम्पियो से लेकर के किसको किसको फोन नहीं किया है, ओके, मैं जस्ट आती नहीं हूँ सामने, क्योंकि मुझे बोलने में ऐसा लगता है कि लोग समझेंगे ये क्या है, इसका दिमाग खराब है, ये क्यों इतना बोल रही है। बट मुझे लग रहा है कि आज मुझे बोलने की जरूरत है कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। नहीं अब मैं मैम, अभी हम बताती हूँ, बस हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, नहीं, प्लीज प्राइम प्रोटेक्ट मिनिस्टर अर्नब। कुछ नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कुछ चीजें होती है जो स्टेट ही कर सकता है, ओके, और जब हम मेजोरिटी के साथ किसी को नहीं जिताते हैं, ओके, तो अब प्राइम मिनिस्टर सेंटर का कर सकते हैं, स्टेट का वो कुछ नहीं कर सकते। तो Yeah, but हमने ma'am, क्यों वोट human दिया? rights तो है, there was no reason to take Arnab to that No, no, horrible state have place. a more power. State can do. ये बोलना गलत है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई भी That's राष्ट्र true. में अगर कुछ गलत हो तो प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन कर ही वही सकते मैं हैं। बता रही हूँ, That's true. होम मिनिस्टर इंटरवेन कर ही सकते हैं। तो बोलने के लिए 5 मिनट, प्रेसिडेंट इंटरवेन कर ही सकते हैं। Okay, you know what? That's Let's do true. it लॉ this way. 5 You know, मिनट सुनो एक बार, even though I'm not agreeing with what she's saying, let's give her 2 minutes. What she's या asking for, जस्ट गिव let's मी hear her 1 out. मिनट। Okay, I'm मैं gonna put एग्जाम्पल everyone, के साथ including देती हूँ, myself, on mute. एग्जाम्पल, हमें 370 पास करना था, राइट? ओके, हमारा 370 पास नहीं होता, क्या हुआ? अमित शाह का दिमाग चलता है, वो आए विधानसभा के अंदर, जब उन्होंने 370 की बात करनी चालू करी, सारे कांग्रेस वाले बाहर निकल गए, एंड अमित शाह ने उस चीज का फायदा उठाया और इमीडिएटली वहीं पे वोटिंग करवाया, बोला आप बाहर चले गए, जो भी सदन में बैठा था 370 पास हो गया, ओके, वो 370 कर दिए। इसी तरह से कृषि बिल भी पास हुआ, पर एवरी टाइम नहीं हो पाता है। हमारे लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ओके, हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ओके। राइट नाउ हम मोदी जी अभी सेंटर में कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, स्टेट में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऐसे ही बने हुए हैं कि ये काम स्टेट वाले कर सकते हैं, ओके। प्रेसिडेंट रूल अभी राइट नाउ इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। अच्छा, अब बताती हूँ मैं कि महाराष्ट्र क्या चाहती है। महाराष्ट्र चाहती है कि हम लोग वायलेंट हो जाए और कुछ गड़बड़ करें, बिकॉज हम लोग सब अर्नब से प्यार करते हैं, ओके, एंड वो खुद भी चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, वो रायट्स करना चाहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, उनका क्या, यू हैव टू थिंक। हमारे जो शरद बाबा जी है ना, वो शकुनी है, उनके दिमाग से सोचिए, उन्होंने किस तरह से चक्रव्यूह में फंसाया है अर्नब को, ओके। मोदी जी, आपको क्या लगता है मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, हमने उनके हाथ बांधे हैं। आई होप सरकारी जॉब के चलते बिहार वालों ने उसको वोट नहीं दे दिया हो, 9 क्लास वाले पढ़े लिखे को, क्योंकि सरकारी वोट्स अब सरकारी जॉब्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में। अब वो लोगों को पागल बना गए हैं, और फिर क्या होता है, हमारे लॉज पास नहीं होते, ब्रिटिश के टाइम के लॉज चल रहे हैं, हमें ये लॉज को चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें Yeah. ओके, यदि आपको लॉ चेंज करना Okay. है,
let me स्टेट में भी उसको let me लेकर stop you आइए. now. Let me just stop you now for a Yes. second. While I partly agree with what you said, but I also disagree. हाँ, I'll give you an example. थोड़ा सा जितना मेरे को नॉलेज है इसके बिल्कुल बारे में, बिल्कुल, ये जब ये कभी कोरोना फुल वायरस नॉलेज का नहीं इशू है हुआ था, इसलिए. हाँ नहीं नहीं, जब ये कोरोना वायरस का इशू हुआ था, हाँ, उस टाइम पे सिटी या स्टेट को लॉकडाउन करने का जो एक्सेस होता है, जो राइट होता है, वो स्टेट के पास होता है. बट दैट इज नाउ हाउ इट हैपेंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर superseded all the laws against any state, and he locked down the entire country because of coronavirus. So ये कहना कि हमारे प्राइम उसका मिनिस्टर भी आंसर है, नहीं कर उसका सकते. भी आंसर है, हाँ जी, क्योंकि कुछ एग्जम्पशंस होते हैं और महामारी उस एग्जम्पशन में आता है. करेक्ट. और ओके, नेशनल तो सिक्योरिटी भी. उस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी देखिए, Please, अभी madam, नेशनल let him सिक्योरिटी speak. महाराष्ट्र में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. No, no, no. अर्नब के So, साथ ज्यादती हो गई है. right. हमें अर्नब से Please इसलिए let him प्रॉब्लम हो speak. रही है. देखिए, इस तरह की ज्यादती बहुत लोगों के साथ होती है. मैम लेट मी से समथिंग. वो टाइम कब आएगा जब जेल में अर्नब को मार दिया जाएगा, तब आएगा. अरे उससे पहले नहीं असर नहीं होगा. सर, सर अरे सर, मैडम, क्या please, बात कर रहे हो मैम, बहुत प्लीज. प्यार करती हूँ. मैं भी अर्नब से प्यार करती हूँ और मैं दूसरी जगह बहुत वोकल हूँ. पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, अर्नब से हम प्यार करते हैं, हम अर्नब के साथ इमोशनल हो गए, बट इस तरह की बदमाशी ये लोग कितने जन के साथ करते हैं. आपको क्या लगता है मोदी जी सुप्रीम कोर्ट या ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है. सब कोई मिडल ऑफ द नाइट. वही तो सारा दुनिया पूछ रहा है कि वो बैठे क्यों है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो कुछ देखिए, कर क्यों नहीं रहे. लॉर्ड का छितर बितर हो गया महाराष्ट्र में, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे. सिर्फ ट्विटर पे बोलने से हो जाएगा मैम? ऐसा तो नहीं हो. सेंट्रल के पास तो बहुत पावर है. कितना पावर है ये आप लोग को मालूम नहीं, हम लोग सेंट्रल के पास तो बहुत पावर है मैम. बहुत पावर है, बहुत पावर. हद से ज्यादा सेंट्रल के पास पावर है. प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत पावर है, प्रेसिडेंट के पास तो बहुत पावर है. प्लीज ये बात प्लीज भैया मत बोलिए. सेंट्रल, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, इस लोग के पास बहुत पावर है. प्लीज let us not override each other. Let us have respect for every person and please give chance to others to talk also. You cannot just run the show on your own. So please be respectful for all the participants in this session. Varun is very kind to all of us. Does not mean that everybody should keep on speaking for more than a few minutes. Now, I would like to say that all the laws are in place, yes, but do you know that there is legal mafia also? Because of legal mafia, the Ram Mandir decision took so many years. यही बोलना चाह रही हूँ. But मुझे थोड़ा सा no, the legal mafia. Wait a minute. Now you keep quiet, please. I'm sorry if I'm being rude with you. Please do not disturb others who want to get their chance to raise their voice and make their point. Because Varun has been very kind to all of us does not mean that you disrespect his being a moderator. He is a moderator. You have to respect Varun as well as all of us. You cannot keep talking all the time. The lady who you are countering does not mean that she doesn't know half the law. She knows the law. But not all of us are good at all the laws, right? Before used to tell us one thing, connect the dots. Now connect the dots also means that that's why I'm saying I'm connecting the dots, sir. Please wait. Do not talk in the middle. Before used to tell us connect the dots. Now connect the dots also means that this is partially the rehearsal and the trial show of Ghazwa Hind taking place on a larger scale. Yes, means that you are. Wait a minute, please wait. You do not talk in the middle. So this is a very, very sensitive issue right now. So if Mr. Modi makes the smallest mistake, it can become a very big mistake. So they are playing. They have to get many people punished. So there has to be many laws in place. We have to hold patience. We have to be patient at all the time. But
wish for a good outcome that we desire to happen. We Okay, cannot just keep getting hyper at every point. correct. Varun is really very kind and very, very No, I'm not. humble that he's Naushad ji, allowing thank you us so here much. to talk. Thank you for appreciating, my humbleness, but that's not the case. I really No, want I to be am mindful. not. I really want to be I am mindful that mindful. everyone gets an opportunity to speak, but yes, not Yeah, like the but way we are doing it today, for sure. Varun, you need to be respected. I'm sorry to say that. No, no, thank you for I that. have been watching But many of your shows, and I got a chance after 15, 20 programs of yours, and I did not complain about it at all. yeah, yeah, I'm okay. very honest to you. One last comment. We have very few minutes left. I really want to give everybody a chance, but to you, Miss SSR, I think while we really want to talk about this in length, I would rather have somebody like an advocate or somebody from the system while we do this, because I don't want to pass on any information which is either half baked or half correct. नहीं, नो नो, मैं Varun, वही बोलना चाहती थी, what, गजवाए हिंद Varun, वाली ही बात बोलना चाहती थी। 1 minute. Varun, Yes. I have one point to make here. Why can we please invite Pushpendra Kochre and uh, Colonel R.S.M. Singh and Lalit Ambadar to speak on our That's right, show, yes. and they will guide us in the right direction. Okay. Just WhatsApp me these all the names, and I will make sure I'll try to get in touch with For them. sure, Okay. we Thank you will so do much. that. Thank you, Rashid. Yeah. You Varun, just just got want to my ask actually, you, I was can about to tell that. Thank you, can sir. Thank you. international human rights can interfere, Varun? Just want to ask you, Varun, if I call the UK, Yes, human rights, Yes. yes, The can short they answer is interfere? yes. If there is a yes. lot of pressure coming from a lot of people, it depends on, Yeah, even a single case Mhm. will make a difference. But if we are a lot of yeah, people, it will yeah. definitely make a lot of noise. Okay. Yes. I'm going That to is call Varun, them now, Varun, this is So within I'll, this side. Yeah, Varun, let me share with you like what Madam was telling about the Human Rights Commission. But Yeah. looking at the kind of dynamics that is going on in India, whether it is Disha Shalyan or our SSR or now Arnab Goswami, looking at the kind of movement that is happening on social media on the streets of India, don't you think the Human Rights Commission is making a note of all those things to take a legal action towards the government? So again, they cannot just again. Pardon my ignorance, okay, but I don't think they can take any action right away on their own. It has to Okay. be something that either their own citizens, or people from the community, they raise it to them, where they bring up like a case that this is Mm-hmm. how many people have reached out to us, this is something which really needs attention. And they don't have I don't think, again, don't take me against me, but I don't Yeah. think they have the capacity or the power to rule or overrule anything. All they can do Mm-hmm. is they can bring this to the attention, and Mm-hmm. then yes, if there is a lot of outcry, if there are people, like, they're also observing, right? In US, if we are doing all these, people are Yeah. on the streets and they're gathering together, they're posting pictures, they're making observations for sure that what they're doing it in Yeah. bits and pieces. Tomorrow it could become a national security risk for their own country or that location. Yeah. That Yeah. way they will definitely bring this to the forefront, that what, in these pockets all these disturbances are happened. We don't want something that is happening in a totally different country to impact our country's Mm-hmm. safety and Mm-hmm. protection. So they will definitely speak that, be very vocal. But Yeah. if something goes out of proportion, like the Black Lives Matter is a very good example. If Yeah. something happens in US, in a very small city or state, that Yeah. took such a global, and led to such a Yeah. global outcry, Yeah. where different countries had the similar kind of experience. So those kind of issues are very easy to be picked up. Yeah. Now, Arnab being a very high profile, journalist, it is Yeah. definitely not, and that's why I was trying to disagree to Miss SSR, was reason being, when you say Prime Minister cannot take action because of the state and rules, there are certain, these are, journalism is also a very strong pillar, right? And there Yeah. are certain things that they are not accountable, they should not be doing it. Yes, there are certain guidelines, city state have their own guidelines as well, but a prime minister in India,
a president in US and similar other countries, they can just, you know, squash everything, and their rule or their statement becomes the law at that point of time. With Mhm. certain obviously, you know, whatever you want to call them, right? I mean, कुछ थोड़े बहुत इधर के दाव पेच होते हैं जो उनको देखना पड़ता है, but at That the is same true. time, That's what I'm yeah. saying. The Mm. quashing we can do actually. They can quash it. क्या होता है कि he is a high profile journalist, but आप सोचो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगली एक दूसरा आदमी जो छोटा जर्नलिस्ट है, चाहे वो बड़ा जर्नलिस्ट है, लीगली दोनों इक्वल है, क्योंकि वो बड़ा और हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है और दूसरा एक छोटा जर्नलिस्ट है जिसको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसके लिए दोनों के लिए लॉ अलग नहीं होंगे, दोनों के Correct. लिए लॉ सेम है। Correct. हम सड़कों पे उतरे हैं, दैट इज मेकिंग अ मोमेंटम, नो डाउट। Yeah. ओके, हमने प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सामने कि प्लीज हम क्या करें। ओके, सो क्या होता है कि यूएसए के अंदर हम लोग सबको अपने राइट्स मालूम है, इंडिया के अंदर जैसे विभोर बोलता है कि हमें अपने राइट्स नहीं मालूम है, हमें अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। इंडिया के अंदर सिर्फ यही चीज है हेलो कि हमें अपने राइट्स नहीं मालूम है। हेलो मैं बोल सकती हूँ? Yes, yes. हाँ, तो क्या है, देखो आप सोचो स्टेट क्या सोच रही है। आपको एक्चुअली इनडायरेक्टली ये सबने बताया है कि स्टेट रायट्स करना चाहती है। एनके सूद को बुलाइए आप, एनके सूद का मैं सारे वीडियोस देखती हूँ। एनके सूद ने यही कहा है कि आप लोग समझने की कोशिश करो कि सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बुक है फॉलो करना पड़ता है, उसमें यदि एग्जम्पशंस दिए हुए हैं, उसमें यदि एक्स्ट्रा राइट्स है तो प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली आएंगे। अब देखो जैसे यदि रायट्स हो जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल इमीडिएटली लग जाएगा। स्टेट यही चाहती है कि हम रायट्स करें और ये जो बोलते हैं गजवाए हिंद हो जाएगा, स्टेट यही करना चाहती है। आप ये सोचो इसके अंदर माफिया है, इंटरनेशनल माफिया है, दुबई है, पाकिस्तान है, ISIS है। वो क्या करना चाहते हैं? शाहीन बाग में क्या बोला था उन्हें? हमें आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी चाहिए। जिन्ना वाली आजादी क्या है? जिन्ना वाली आजादी है डायरेक्ट एक्शन, जो कलकत्ता में हुआ था। जैसे ही जिन्ना ने बोला डायरेक्ट एक्शन, आप सोचिए ये कभी भी हो सकता है, because right now we are dealing with those मैम वो सर people. को, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज सॉरी, वो सर को बोलने दीजिए, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। प्लीज मैम, हमारा मेन मोटिव ये है वरुण के शो में आने का है, हम हमारे अर्नब को वापस चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते वो सब कुछ मैम। हम चाहते हैं जस्ट अर्नब सेफली घर आए, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं सारा And इन्फॉर्मेशन। actually, I just have less than 5 minutes now, so yes, let's या close. I haven't लेट heard लेट दैट anything सर from Shiva. स्पीक। Yes, please, या Noshirji, please say whatever you want to say, and then Shiva, let's wrap it up with you, please. या Yes, Noshir, you were saying something. 1 minute. Yes. All said and done, like you have been raising your voice about being patient and watch and pray. These are the few things we need to be united to follow and trust in God, faith in the legal system, and confidence in our unity and stand, which are all important. This is very important right now. All right. We Yep. must trust God because God is the only one you can trust, nobody else. Faith True. in the legal system because the law has been made for that. And confidence in our own self for marching forward and being patient also. कि मंजिल इतनी भी दूर नहीं है, मंजिल बहुत करीब है. All We right. just have to fight a few wounds, that's all. All right. Thank you. Thank you. Yes, Varun, 1 second. Miss SSR, if you could please reach out to me. You know, आप मुझे email कर सकती हैं या आप हाँ, मेरे का मैं आपको ईमेल करूंगी एक्चुअली। हाँ. मैं So let सोच me ही रही थी कि ये डिटेल में थोड़ा सा मैं correct. टेक्निकल लेवल पे बात करना चाहती हूँ। Sure. I will invite you Yeah, when we have the right kind of folks on the call, and then let's yes, talk about it. Yes, Varun, yes. please say whatever you want to say before I take Shiv.
Sure. I'll just finish this quickly, but as much as I wanted to resist myself, I just wanted to say this. आज हम लोग एक चीज याद रखना चाहिए. सिस्टम ने अर्नब के अरेस्ट के साथ हमारा मुंह पे चाटा मारा है और बहुत जोर से मारा है. तो मैं सुन रहा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि पुलिस ने ये नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया. वो सब तो है, उन सब से तो हम लड़ेंगे. लेकिन मूल्य बात यह है कि we should also understand कि what are the promises that we are going to make today now as a part, as a mark of this whole thing that happened with Arnab. Are we going to boycott IPL? Are we going to boycott Bollywood? Are we going to boycott paid media? Are we going to really stand by this? Are we going to stand by SSR until he gets justice? Not just SSR, but all. This is something we can do, which is very much within our control. And this can bring change. We have seen what has happened. With SSR's case, there is a proof that change has an impact. And common man still has the power. At least till now in India, we have still not reached a stage where we are taken over by a military rule, right? So we have the power. I just wanted to say this. Today, we have been slapped on our face. We have been rapped on the knuckles. And this is the time you take an oath that, you just do it. There'll be 12 people, 10 people who will ridicule you. There'll be one guy who will support you. And this is how it spreads. And then the one becomes 2 and 3 and 4 and 4. And that's how SSR's case just went like a wildfire. So please take an oath as a common man as to today that we are not going to support those elements which are anti-national. Absolutely. Thank you. All right. Thank you so much, Varun. All right. Thanks. All right. Let me just do it this way. Sunita ji, any last comments, anything you want to say? That's it, Varun. I just want to pray for Arnav that I want Arnav to be out. And I'm going to call the human rights here. Yep. And when my husband is back from work, hopefully I will write a strong letter to them. Yep. And because I want to, address it to them that we are getting disturbed, we are getting stressed out, and we are not happy what is happening. And also because Arnav got a young child, he's only 13-year-old, and they have to, protect the wife and the child. And Arnab, obviously, definitely. So, in UK, these things matters a lot. They really think about these things. You see, It actually they're matters very serious everywhere. about. It actually Yeah, matters everywhere other than yeah, everywhere. Yeah, India, Varun, everywhere. Yes, but Varun, India, I don't know how can they, sitting backside and they're watching it's happening. I mean, people are, I don't know. I respect for Modi, but I don't know. I'm losing faith. This is Okay, what I no can worries. say here. Yeah. But Thank you thank so you much. so much, Sure. Varun. Sure. Thank you so Thank you, much. Varun. Always Bye good bye. to see you. Take care. Yeah, thanks. All right. Yes, sir. हाँ, Common man. मैं एक चीज तो One ये second. बोलना One second. ओ One सॉरी second. Let's सॉरी go by सॉरी sequence. Yes, no worries. Yes. Your last comments, please. Common man. मेरे को बोल रहे हैं Sir, I'll talk. I'll not take more time. I'll not take more time, sir. I just want to say, really, sir, very sad day, sad day for everyone. First of all, अर्नब का रिलीज चाहिए. सेकंड, जितना सारा ये सब एंटी सोशल है जो भाई ने से कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ, वो बॉयकॉट होना चाहिए. थर्डली, यू हैव टू चेंज द सिस्टम. एक अंगूठा छाप वाला मंत्री कैसे बन जाता है, वो वाला सिस्टम पे रोक लगना चाहिए सर. यू हैव टू चेंज आवर संविधान. Absolutely. ये संविधान में लिखा है एक अंगूठा छाप वाला आदमी मिनिस्टर माने मंत्री बन जाएगा और जहाँ माइक फेंक फेंक के झगड़ा करेगा और उसके अंडर में आईपीएस सब बड़े बड़े माने लोग उसके अंडर में सब क्राइम करेंगे सर. ये सिस्टम चेंज होना मांगता है सर. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. All right. Yes, Mr. Sir. थैंक यू सर. वरुण सर. Thank you. Jai Hind. ओके एक तो मैं लिबर्टी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं यूएसए में मेरा खुद का केस चल रहा है. मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, एंड फ्रॉम लास्ट 12 years द केस इज गोइंग ऑन. तो यहाँ भी रास्ते सीधे नहीं है, इसलिए इसी वजह से ये समझ में आने लग गए मुझको. ओके, एंड मैं एनके सूद की और पुष्पेंद्र कौशल इनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ, बिकॉज मेरे ये एक्चुअली इंटरेस्ट की लाइन भी है. मैं आपको भेज दूंगी. मेरे को डर इसी चीज का है कि अभी हम 1947 के टाइम पर हैं, एकदम जिस तरह से हम 1947 में जब हमारा बंटवारा हो रहा था, हम उसी टाइम पर हैं.
आप बस उसको समझ लो कि जो सेंटर है वो पाकिस्तान की तरह डील करेगी, वो मारकाट करना चाहती है, ओके, वो डायरेक्ट एक्शन करना चाहती है, वो चाहती है कि हम वायलेंस करें। सो प्लीज अपन को वायलेंस नहीं करना है। बट इतना बता देती हूँ, अंदर ही अंदर बहुत तैयारियां हो रही होगी, ओके। उस समय प्रेसिडेंट रूल लगेगा, कमांडोज भी आएंगे, सब कुछ होगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हम कितना तैयार है उसके लिए। वो लोग भीड़ में आते हैं एक साथ और गड़बड़ करते हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। हम ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं ना कुछ और, हम खाली बैठे रहते हैं, मोदी जी पे, प्रेसिडेंट को चिल्लाते हैं। आपको नहीं मालूम है मुझे कितना दर्द होता है। मैं लड़ती हूँ, मैं आती ही नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सबकी बातें सुनती हूँ। आई होप वरुण आप समझ पाए हो, आप समझा दीजिए। Madam, actually, I watched NK Sood's video as well. तो ये पता नहीं हम लोगों के इतने शोर मचाने के कारण हो रहा है कि क्या हो रहा है, बट इट्स लुकिंग लाइक कि बीजेपी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रही है हम लोगों को कि वो क्यों एक्ट नहीं कर पा रहे, उनकी मजबूरियां क्या हैं। तो अगर अगर मोदी मजबूर है या अमित शाह मजबूर है या ये गवर्नमेंट मजबूर है, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इतनी यही कहती हूँ, क्योंकि जनता के जब आप हाथ में उनका है। नहीं मैडम, आप मेरी बात सुनिए। तो जब उनका वीडियो देखा, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, तो उसमें भी यही यही बातें कही गई हैं। और दूसरी बात है, एक और वीडियो आया है किसी जर्नल का जिसमें कहा गया है कि अर्नब को इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जेल में। मैडम मैं समझ सक रही हूँ। तो व्हाट विल हैपन टू दैट गाय? मैडम मैंने अपनी आंखों से कुछ चीजें देखी है, और मेरे पापा खुद लॉयर है और एक्चुअली इसी चीज में थे, एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग एवरीथिंग। देखिए, मोदी जी को हमने लोकसभा के लिए चुना है, बीजेपी को हमने विधानसभा के लिए पूरी सीट नहीं दी है, स्टेट के सारे पावर्स नहीं आते हैं। मोदी जी देखिए, जैसे इफ प्रेसिडेंट रूल लगाने के प्रीरिक्विजिट्स खत्म हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, कमांडो भी आएगी, मिलिट्री भी आएगी, सब कुछ आएगी और वो लोग तैयार भी होंगे। पर मैडम कब आएगी? प्रॉब्लम ये है कब आएगी? Okay, वो तो you know what? इनके सूद I भी बोल think रहे हैं। this discussion will never end अगर ऐसे नहीं करेंगे. Of course, I really want to. वो समझा Yeah, सकते हैं so let me get the right people and let's get on to a different forum. This is not the forum right now. I think tonight we are just here for Arnab, and we really want to talk about what to do. Yes, so Miss SSR, I will definitely take you back again. As I said, reach out to me. We'll have you in the next session as well. All right, and I need to wrap it up. So please, thank you so much. Yeah, thank you so much. All right, Vipin, please. Yeah, One thanks, second, Varun. Noshiji, 1 second. Vipin, please. Go ahead. Thanks, Varun. I just want to encourage my fellow SSRians, all the citizens of India who are watching this show right now live, and the global citizens and SSRians who are watching this live right now and who will be watching the recorded session later. Just think about this fact, my dear friends, and all the fellow citizens of the world. Think about it. If such things can happen to Disha, Sushant Singh Rajput, Arnab Goswami, what will happen? God forbid if something like this or of this nature happens to you or some of your colleagues or relatives in your community. Think about it. So it's, I think, time for all of us to raise our voice like the way we raised our voice in Twitter and the matter went to CBI. It was a momentum. It was a movement that we all created. So probably we need to do something different and beyond imagination in terms of keeping the laws in mind and coming out in support of Arnab Goswami. Thanks, Varun, for this opportunity. Thank you so much. Thanks, Vipinji. Thanks, man. All right. Say yes, Noshirji, please. Noshirji? Yeah, I was listening to this guy, but I had watched a couple of videos earlier, a long time ago, where somebody was saying that there is a great possibility that the central government is planning to make Mumbai union territory very soon. So there could be many, many other things, the reason being for that. You there? Yeah. Oh.
Let me see. So, Noshaji, you can come back. Looks like we dropped off. Yes, Shiv, you've been waiting very patiently. Please go ahead. No, thank you so much, Varun. This is my first time joining the channel. I really appreciate you taking the initiative to fight for Arnab. I know it's whatever is happening for Arnab is it's extremely sad to see. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस अर्नब के केस में आपको क्या लगता है कि बाकी सब जो लुटियन जर्नलिस्ट का भी हाथ हो सकता है, शेखर गुप्ता जैसे, राजीव सरदेसाई, बरखा दत्त का भी कुछ ना कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है एनसीपी और शिवसेना के गवर्नमेंट के साथ? बस सर, वही मेरा सवाल है हाँ, और नहीं, कुछ नहीं। बहुत बहुत सिंपल और बहुत इजी है, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ऑब्वियसली मेरी खुद की वाट लग जाएगी, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर, आई डोंट वांट टू शाय अवे. There is definitely all possibilities, right? Because we all know how this, any industry actually, journalism को छोड़ते हैं, बॉलीवुड में अगर सुशांत के साथ इन्होंने ने किया, and सिर्फ वो ब्लाइंड आर्टिकल्स ही नहीं, लोगों को कह के मूवीज भी लेना और सब कुछ करना. If somebody is getting more limelight than a superstar nepo kid, then obviously there will be people, right, who will do same thing journalism, as Right. much as I said, right, there are things about each journalist, चाहे वो अर्नब हो, चाहे वो कोई और भी हो, सबके लिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हर एक का अपना स्टाइल है. There are certain things that you like about certain person or individual, certain things you don't like about certain individuals, but you're spot on. Yes, there is a possibility, I'm pretty sure, and नहीं भी होगी तो अब इसको वो अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, because this is a great opportunity for them to now, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, वो राजदीप सरदेसाई से रिलेटेड, where even he was like literally slapped in New York, right, for whatever. And इस टाइम सबको मौका मिला है. I am pretty sure there are Right. people behind the scenes working to make sure this happens for some good time. But at the same time, I think we all have to keep trust and we have to keep patience in our system. एक चीज मैं इसी बहाने आपके क्वेश्चन से बहाने से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, because we are at the end of the session now, that no matter what happens, people have to really understand they cannot just kill Arnab in the jail. Please try and understand, इस टाइम पे उनको सेव रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे, लोग इस इमोशंस पे चल रहे हैं. People have to understand he cannot be just killed like anything, even though yes, his life is at risk, he will be tortured, no doubt about it. That's what we should focus on, and we should make sure that he comes out. But ये कहना कि उनको मार दिया जाएगा, I think that's a little, लेके चले, मैं I'm gonna take a little bit of liberty on that. Even if you feel that way, and even if the underworld, चाहे वो जैसे कह रहे हैं कि some D gang के लोग हैं और ये हैं वो, even if they are there, police will be at higher risk to protect him from those guys, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो वो D gang के लोगों को कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने पुलिस को, they're gonna tear them apart. So and this is what is going to happen. So guys, please try to understand, it is not that easy, it will not happen. You just need to keep a little bit of more patience. There were certain things जो कि निकल के आई हैं और आगे भी निकल के आएंगी. There were things that could have been done differently from his lawyer's perspective. I will definitely have these people जो आप लोग बोल रहे हैं, we'll try to get them on board. We will also try to get some advocates who can speak from a legal perspective and get some clarity. But provided आप लोग सुनने को तैयार हो. एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे, that people are so high on emotions, they just know one thing and they are focused on that thing, that this is what and how it should be done. They don't really want to understand the legalities and technicalities. ऐसा नहीं चलता, वो कहीं भी नहीं चलता, वो यूएस में भी नहीं चलेगा, कनाडा में भी नहीं चलेगा, इंडिया में भी नहीं चलेगा. So let the legal team speak about it. I will make sure I'll get hold of such people. You put your questions that way, but end of the day, इस टाइम पे, जैसे कि पता नहीं किसी ने पहले भी बोला था कि सिर्फ भगवान पे ही भरोसा रखो, अब किसी पे भरोसा रखने का है नहीं. I think that's the sad state of affairs of the situation right now, and that's how it will be. So, but thank you, Shiva, for that question. Yeah, मुंबई में जाने के लिए भी तो मुझे डर लग रहा है अभी, ऐसे सरकार हो गया अभी, right? Absolutely. And last thing which I like to say, with that is, people also need to understand one more thing. All of a sudden, why did Arnab become
द सेंटर स्टेज पे, जिसे कहते हैं ना, उनको क्यों डाल दिया? कहाँ गया सुशांत? कहाँ गया दिशा सालियन का केस? व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट? हम लोग तो नहीं अब हटेंगे, हम तो वापस वहीं आएंगे। हमने सुशांत से ही शुरू किया था, वी आर गोना टॉक अबाउट सुशांत। Think about it, guys. जैसे सब लोग कहते हैं ना, connect the dots. Please try to connect the dots. What is happening? Where did Sushant got missed out in all this? So think about it and act accordingly and act sensibly. Is all I can say. Only good thing today for me was Arjun Rampal was interrogated by NCB, so I am kind of Varun? happy that something happening. Yes, yes, I heard. Yes, please. Thank you. Sure, Seva. Thank you so much. So, Varun, I wanted to say that you should watch NK Sood's video because it has some answers, it has some directions. And another thing I wanted to say is that can you approach your country's journalist or the media, which is the most popular media, so that they can write something about it? Yes, yes. Because that will be powerful. It is against a journalist, so Correct. that will be powerful. So I have the email drafted, and I am in the process of getting more email addresses so that I can shoot it across. I'm gonna make some calls. Weekend पे it was not possible, but yeah, Monday, जो कि अब हो चुका है मेरे लिए भी, सुबह के 5 बज गए हैं. I'm gonna talk to them, and we will definitely raise voice for sure. ठीक है. Oh, thank you, Garima. All right, Puneet, please go ahead. Puneet. Hello. Yes, Puneet, please go ahead. हेलो वरुण जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है. हेलो. सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने का। वरुण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आज जैसे अर्नब को बेल नहीं मिली, तो मैं भी काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब जब कोर्ट ने उसको कल बोला था कि यार ये मतलब इलीगल अरेस्ट हुआ है, फिर भी अभी 4 दिन आगे आगे करते जा रहे हैं। मतलब काफ़ी लोगों में भी रिजेंटमेंट है, वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जैसे बीजेपी के पास तो मतलब ये काफ़ी अच्छा मौका है कि वो सरकार गिरा भी सकती हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की जगह कांग्रेस को मतलब वो कर रही हैं, टारगेट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे की, उनके रूल में मतलब लॉ अबाइड नहीं हो रहा। वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है, सोनिया गांधी। मतलब मुझे तो अब ये भी नहीं समझ आ रही, मुझे तो अब डाउट हो गया कि क्या पता सुशांत का केस भी मतलब ये सॉल्व नहीं हो, इनकी कोई डील होगी हो। मतलब जितने भी सेंटर का जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सबने कांग्रेस को टारगेट किया, किसी ने भी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। राइट. नहीं, आई थिंक जैसे कि हम सब भी इस बारे में बात कर रहे हैं, राइट, कि इस टाइम पे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वो तो हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते. वी कैन नॉट इवन से एनीथिंग अबाउट दैट. ऑल वी कैन से और सी इज कि सुशांत का केस एकदम से बिल्कुल ठंडा पड़ गया है. बिल्कुल ही कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा, और कोई कर भी नहीं रहा. दे आर पिकिंग अप डिफरेंट टॉपिक्स एट ऑल, मतलब टोटली अनरिलेटेड. Yes, अर्नब के साथ जो हुआ, दैट इज समथिंग रियली हॉरिफाइंग. जैसे मैं बार बार एक ही चीज बोलता जा रहा हूँ, he might have difference of opinion, he might have a different style of expression, but at the same time, end of the day, there is freedom of speech, and there is a certain value proposition around every single ये जो जर्नलिज्म का एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है. The way they have handled it is really very very bad. Plus जो आप बोल रहे हैं जिस तरह से कि एक टारगेट गलत तरह से शायद कर रहे हैं, you could be right, you could be right that they're focusing on the party rather than the individual who is really leading it in and not leading भी नहीं मैं बोलूँगा, leading is a wrong word, misleading. But at this point of time, I think all as we as citizens of the country, we can do is keep a very close watch, keep your voice on, do what you think is right, अपने हिसाब से करें, but keeping in mind your own safety and protection of your family.
don't do anything that can put yourself at risk, because the way things have been handled जो इंडिया में चल रहा है, you know it's really very bad. It's not something that we could have even expected in any kind of democratic country. तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर ओन सिचुएशन. बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस सेशन में आई थिंक मैं 5 या 6 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि वो करो जितना आपकी कैपेसिटी में है. If somebody like Arnab Goswami, who has the best legal options, who has the highest amount of money possible that he can pump into his own safety and protection, if he is in such a situation, तो आप अपने आप को पहले गेज करें and then take action. Yes, you can do some candlelight vigils, you can do some peaceful marches, you do all the social media पे जो आप करना चाहते हैं. Don't get provoked, don't get agitated by certain comments from certain people, क्योंकि वो शायद उसी वजह से उनको वहां प्लेस किया गया है, so that they can agitate you. They want something wrong to happen, and really we really cannot give them this opportunity, so please be mindful of that. Let's be peaceful. Is all I can say right now. And I really want to end this session because 2 घंटे हो चुके हैं, मेरे तो सुबह के 5 बज चुके हैं. So I really appreciate every one of you talking tonight so candidly. Next session जो मैं रखूंगा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ. बोलो. हेलो. Yes. बोलो. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप खुद देखो कि लोग तो मतलब जैसे शुरू में जितने भी SSR थे सारे एक साथ थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई स्मिता पारिक को गालियां दे रहा है, कोई पद्मा जी को सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे लोग आपको आके गालियां दे रहे हैं कि भाई आपने विभोर को ऐसे किया वो किया. तो मतलब काफी दुख होता है ये देख के. अब विभोर ने मतलब जो भी आपने तो उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया ना कि भाई तू अपनी बात रख यार ऐसे ऐसे, लेकिन अब जब मतलब उसको मौका मिला कि अगर उसके पास एविडेंसेस हैं, मतलब सर मैं मेरे विभोर हिसाब से तो या मैं मतलब कुछ विभोर अगर उसके पास और के लिए होता, भी कुछ ऐसा कुछ होता तो अभी तक कुछ एक ही एक्शन चीज तो कम से कम बोलूंगा. हो ही गया होता. हाँ, मैं ये और विभोर उसने ये भी कहा था कि मैं एक वो प्लेटफॉर्म बनाऊंगा. उसने लोगों से 7 लाख रुपए भी इकट्ठे किए थे. उसके बारे में भी अभी हमें कुछ नहीं पता चल पाया. राइट. नहीं, मैं फिर और भी उसको तो बेल भी नहीं मिल पा रही है. नहीं. ये भी वैसे काफी बुरी बात है. राइट. तो मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि मैं एक ही चीज बोलूंगा, चाहे वो विभोर हो चाहे वो कोई भी. राइट. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट के उनको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी. उन्होंने खुद बोला था सेशंस पे, और सबने सुना है. नथिंग टू वेज अबाउट इट. ही हिमसेल्फ सेड कि मुझे अरेस्ट करो तो सही, मैं एविडेंसेस दूंगा. राइट. सो यस, अगर वो हुए हैं और अगर उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, एंड इफ दैट हेल्प्स इन द केस, मोर पावर टू हिम इज ऑल आई कैन से. बट एट द सेम टाइम, लोग जो मुझे आके किसी के बारे में बोलें या किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे बैड माउथ करें, उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही अभी स्टैंडर्ड एक मेरा आंसर है. हम लोग शायद इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितना आप लोग हमें इंपॉर्टेंट बना रहे हो. सो प्लीज हमारे बारे में बात करना, हमारे अंदर डिविजन करना, किसी को पिन पॉइंट करना, टिल द टाइम हम लोग कुछ इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ अगेन अराउंड दिस, प्लीज बोलना बंद करो यार. बिना मतलब के टाइम वेस्ट हो रहा है. डोंट बी अ कीबोर्ड वॉरियर. और अगर कीबोर्ड वॉरियर भी बनना है, इट्स अ गुड थिंग टू बी अ कीबोर्ड वॉरियर. बी अ कीबोर्ड वॉरियर, बट बी फॉर द राइट कॉज. जाके वही 4 लाइनें जो हमारे लिए लिखनी है या हमारे लिए वीडियोस बनाने हैं, प्लीज मेक दोज वीडियोस, राइट दोज कंटेंट फॉर सपोर्टिंग somebody, and stop maligning people, stop taking names for your own personal 2 मिनट की. यस, मैं आपको स्क्रीन पे फिर ले आऊंगा यार. अगर आपको वैसे फेम चाहिए मैं वैसे ही ले आऊंगा, आप आ जाओ स्क्रीन पे. बट प्लीज डोंट malign people. और सिर्फ मुझे ही नहीं मैं कह रहा, आप किसी को भी, आपको विभोर और मेरा क्या पता है क्या नहीं पता. इफ यू डोंट नो अस, don't speak about us. If you want to know about us, then talk to us directly, one on one. मेरा नंबर पब्लिक है यार, कॉल मी. अगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए या आपको कोई बातें करनी है, मैं आपको बताता हूँ फिर. But at the same time, I very clearly said, stop talking about us. We are not important. We are just, वो कहते हैं ना, हम एक मीडियम है. Let us just be that medium for bringing the information or sharing the information, or for you to वरुण, talk. मैं एक चीज और कहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में. हाँ जी. कि मतलब
जैसे मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि सब लोगों को, यही व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आप सब मतलब यूनाइट रहो। अगर आप बोलते हो कि भाई उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसकी बहनें हैं, मतलब जो भी इन्वॉल्व होगा वो लास्ट में तो आ ही जाएगा। मतलब सीबीआई जब मतलब बताएगी कि यार इन बंदों ने किया, तो वो तो आ ही जाएगा। आप कम से कम इकट्ठा तो रहो। मतलब ये थोड़ी ना कि आप बीच में टूट जाओगे और लास्ट में कुछ हो ही नहीं। Yeah. मतलब आप ऐसे किसी को, अब वरुण को देख, मतलब वरुण मतलब उन पे भी कितना बीच में प्रेशर आया था, फिर भी वो अभी मतलब हमारे, हम मतलब एक साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है हमें। मैं वही मतलब आपका भी काफ़ी शुक्रिया अदा हूँ कि आप हम सबको एक साथ थैंक यू जोड़े सर। रखे हैं। और भी बस काफ़ी आप लोग हमारे यूट्यूबर्स साथ हैं, ऐसे जुड़े रहें एंड लेट्स बस कीप मैं द यही कहना चाहता हूँ। मूवमेंट और हाई। थैंक यू। या थैंक यू सो मच पुनीत, एंड थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली मेरी यही रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, प्लीज लेट्स कीप द मूवमेंट हाई। डोंट गेट इनटू दीज पर्सनल एजेंडाज, पर्सनल वेंडेटास। हम देख ही रहे हैं पर्सनल होके क्या हो रहा है। ये लोग पर्सनल होके उन्होंने केसेस कर दिए। स्टे आउट ऑफ दिस, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स स्टे यूनाइटेड। और हम लोगों के बारे में बात करना बंद कर दो। हम लोग इतने इम्पोर्टेंट एंड इतने रेलिवेंट नहीं है इस मूवमेंट में जितना हम इस मूवमेंट को रेलिवेंट रखना चाहते हैं। लेट्स नॉट लूज द मोमेंटम। एंड ऑन दैट नोट, I will talk to you very soon. I will try to get few more people uh, who are more experienced, who have the knowledge, the experience and the expertise to speak about certain things, certain issues. तो उसके बारे में हम बात करेंगे। But for tonight, stay united, guys. I know it has not been a great day, but things will change. Let's hope for a brighter Diwali. Almost 3 या 4 दिन रह गए हैं दिवाली को। Please let's focus on that. Let's make sure not only for us, even Arnabs के घर में भी it's a bright Diwali, and hope it doesn't turn out to be a black Diwali. Already 2020 बहुत मुश्किल साल रहा है सबके लिए। तो please, I would request all of you to please not create any more negativity around anything else, and hope for the best. And Arnab should be out, and so should all the injustices that have been done. I will speak more about other things as well, right? Like Sri Devi ke case, maybe there have been few things that have happened. We would love to have Deepthi back again. I will try to get Nanke Sood again. We'll continue this. We will not stop, and I don't want you to also stop. So please stay focused, stay energized, and stay happy. Thank you. On that note, I will see you guys very soon. Good night. Bye bye.